take this one. Yes, sir. Yeah, there one. I know. ज़्यादा हो गया। हम तो 10 सोचा था 9:30 means 30 minutes 1 hour I request everyone to pay attention. Our honored guests are here. We have with us our chief guest and honored guest amongst us. May I please request everyone to settle down in their places, and I please request them to stay standing as we for the national anthem. Thank you, everyone. With the permission of the chair, I would like to start the program. Honorable Speaker, Shri Pasang Dorji Sona Sir, Honorable MLA, Sir Nilong Hiring, Honorable MLA, Sir Hayang Mangfi, Shri R.K. Krime, former Minister, esteemed panel members, Pro Vice Chancellor of the Rajiv Gandhi University, Registrar, Deans of various faculties, heads of the department, faculty members, officers of the university, research scholars, and student friends. 20 January 2020 marked the 50 years of Arunachal as a distinct, autonomous, geopolitical entity with its own administration. It is the culmination of the efforts of the members of the erstwhile Agency Council, a body that functioned like the legislative assemblies of our states and was formed in December 1969. In the first sitting of the Agency Council on December 3, 1969, it was decided that NEFA's capital should be within its boundary and not in Shillong. This decision to change NEFA's name to Arunachal Pradesh was also taken in this Agency Council's second session. The three names, Udayanchal, Brahma Mandal, and Arunachal were proposed, of which Arunachal Pradesh was selected as the name of the territory, a decision which was accepted by the Government of India. The Northeast Areas Reorganization Act 1971 provided a new name and a new political status to NEFA. NEFA was renamed as Arunachal Pradesh officially by Srimati Indira Gandhi, and subsequently in 28 January 1972, Arunachal Pradesh became the Union Territory of the Republic of India and started its journey into self-governance. Consequent upon passing of the Constitution 55th Amendment Act, Arunachal Pradesh finally attained fullest political status on 28 February 1987. Today we are gathered here to celebrate this day as a part of 50 years of Arunachal Pradesh. We started on the 28th of January 2022 in Zero, where the story began. And it will culminate on 20th February 2022 at the UPIA Outdoor Stadium. RGU is proud to be a part of this celebration. On behalf of the organizing committee, I welcome you all.
May I now please request the students from the Fine Arts and Music to present before us the university song, and I would request everyone to please stand for it. शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। धन्यवाद है परमात्मा इस पुण्य धरा को रचने का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। गर्व हमें इस विश्वविद्यालय आश्रय विविध कलाओं का। उत्कंठ सतत नवयो नवचर और नवोचर विदाओं का। असीम आकाश की संभावना करता सदा तत्पर। उत्कृष्टता अमृतता और शिक्षा दे धारण कर। आओ मिलकर सकल विश्व में मान बढ़ाए करने का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। रोनो हिल चतुर्दिक जिसमें रीत प्रीत सम्मोहित ग्राम। लोक कला और संस्कृति परंपरा का अनगिनकार। बौद्धिक चेतन शोध हमारा हर उत्सव इन गाँवों का। सुख दुख में सहभागी हम मुदियों निरंतर उज्ज्वल का। परमात्मा हमें आशीष दो। परमात्मा हमें आशीष दो हिम की बाती ऊंचा बनने का। परमात्मा हमें वर दो हिंद महासागर बनने का। परमात्मा हमें वर दो हिंद महासागर बनने का। सारी बाधाएं पार ज्ञान हो विस्तार। सारी बाधाएं पार ज्ञान हो विस्तार। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। Thank you, everyone. As a token of gratitude, Rajiv Gandhi University would like to present a small gift to our honored chief guest. I would request Pro Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, and Chairman of the committee to please do the honors. A khata with a ahimsa silk shawl, a wancho wood carving statue, and with flowers we welcome our honored chief guest. May I please request our chief guest sir to please light the lamp to formally start the program.
Thank you, sir. May I now request Professor Amitabh Mitra, Pro Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University, to deliver the welcome address. Good morning and namaste to all of you. Sri Pasang Dorji Sona, Honorable Speaker and Chief Guest of today's inaugural function, Honorable MLAs, Secretary, Professor Saket Kushwa, Honorable Vice Chancellor in absentia, who is out of station and busy with certain preoccupation, Professor P.K. Parigrahi, Registered Dr. N.T. Rikam, Deans, Heads of the Departments, Directors, Faculty Members, esteemed guests, media friends, ladies and gentlemen present. I really feel privileged and happy that I am present here as a part of the Golden Jubilee, that is the 50 years of celebration of Arunachal Pradesh. There are two reasons behind it. First, the institutional reason, that is the Rajiv Gandhi University, the only public university, was made the partner of celebration. In fact, Rajiv Gandhi University is intrinsically involved in the development process of the state and got an opportunity to act as the think tank of the state government by preparing various policy documents like the first Human Development Report of Arunachal Pradesh, State Development Report of Arunachal Pradesh, Report on State Finances, State Cultural Policy, as well as documentation of cultural heritage, and recently the project Unsung Heroes of Arunachal Pradesh. I, on behalf of the university, express my heartfelt thanks to the state government for choosing Rajiv Gandhi University as one of the venues of celebration. I hope that the partnership between state government and Rajiv Gandhi University will be continued and it will be further strengthened in future. Pasang Dorji Sonaji, Honorable Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, to this inaugural function. I would also like to welcome Sri Ninong Eringji, Honorable MLA Arunachal Pradesh, Sri Haing Mangfi, Honorable MLA Arunachal Pradesh, Sri R.K. Khirme, former Minister, and Sri Dani Sulu, Secretary, State Transport, Arunachal Pradesh, for active participation in the panel discussion. My hearty welcome goes to our Honorable Vice Chancellor, Professor Saket Kushwa, in absentia, who is the key person behind for organizing it, but today he's busy for certain preoccupation. Dr. N.T. Rikam, Registered, Deans of Faculties, Directors, Heads of the Departments, Faculty Members, Officers, Students, Research Scholars of Rajiv Gandhi University. I also welcome Mayor M.S. Tangam Rina, journalist of Arunachal Pradesh, and the representative of all Arunachal Pradesh Students Union and other esteemed guests for their kind presence. While welcome you all, I just want to touch upon a few points. Although today's topic is broadly political development of the state, but if we take economic development as the fruit of political development, then the state has achieved significant growth in our income, infrastructure development, agriculture, literacy, and urbanization. State has also achieved structural transformation. In fact, in a nutshell, I can tell you that during the last few decades, state has gone from a need-based economy to a market-based economy and reached the take-up stage for all-round development. Finally,
I welcome one and all. Thank you very much. Namaste to all of you. Ladies and gentlemen, I have been assigned another task, as I already informed. Today, our Honorable Vice Chancellor Professor Saket Kushwaha could not attend the function due to certain preoccupation in spite of his strong desire. However, he sent a message which I shall read out. Quote, "It gives me immense pleasure to extend hearty welcome to the chief guest of today's program, Sri Pasang Dorjisena, the Honorable Speaker, Arunachal Legislative Assembly, and other dignitaries to these epochal events. It is indeed a great moment for the Rajiv Gandhi University, as well as me, for getting the opportunity to host the Golden Jubilee celebration of the land of Dawnlit Mountain. On behalf of the Rajiv Gandhi University fraternity, I express my deep sense of gratitude to the government of Arunachal Pradesh for granting us this exclusive privilege. Arunachal, as the nomenclature suggests, is in the true sense of the term, totally a land of rising sun. As the morning sun rises, his rays keep radiating light and shine across the nation. To say it metaphorically, Arunachal Pradesh quakes up the nation, largest state in the northeastern region, has traveled a long way since the creation of Northeast Frontier Agency in 1954. On 20th February 1972, it was renamed as Arunachal Pradesh. In 1987, the Union Territory attained statehood, and thus the state entered into a crucial phase of its history. The 5-decade history of the state has been checkered and colorful. From turbulence to tranquility and teething problem to smooth progress, Arunachal Pradesh has witnessed and experienced all stages of development. State is blessed with a bountiful of natural resources. Its flora and fauna are globally acknowledged for their variety and unity. The deep cultural, ethnic, and linguistic diversity of the state is and stands as a microcosm of the subcontinent's diversity. No amount of praise would suffice to depict the industrious, affectionate, and friendly people of the state. Every Arunachal is like a pleasantly warm morning sun. A casual visitor to the state cannot miss the unmistakably affordability of the people, and I personally feel that they always feel like Arunachali. The state has registered considerable progress given its age. Its progress in the range of areas like education, health, participation, skill development. For example, with only 7.12% of literacy in 1961, the state covered a long route of 5 decades to achieve 65.35% literacy in 2011. As per the other data is going to move many notches, and in key areas like per capita income, industrial growth, tourism, and most importantly, governance in the Human Development Index in the coming years. I attribute the success to sagacious leadership of Honorable Chief Minister Sri Pema Khanduji and the wise advice and guidance of the Honorable Governor Brigadier Dr. B.B. Misroji. Let me take this opportunity to put before you that RGU has been contributing its mute to this development process of the state, and I hope the university will continue to serve the state with all sincerity. And extremely delighted to be part of the momentous occasion and greet the people of Arunachal Pradesh on the eve of Golden Jubilee celebration of the state. Unquote. Thank you very much for patient hearing. Thank you, sir, for doing the honors and sharing with us the message from the Honorable Vice Chancellor. I would take this opportunity also to welcome all our viewers on Facebook and YouTube Live. I would like to share here that the students of the Rajiv Gandhi University have also joined us over the Google Meet. This program is going live from the page of 50 Years of Arunachal Pradesh, both on YouTube and Facebook. Moving on, may I please invite the chairman of the Political History Seminar Cluster, Professor P.K. Pranigrahi sir,
to give us more details about today's program. Sir, I invite you. Good morning to you all. Sri Pasang Dorji Shonaji, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh State Legislative Assembly, Honorable Vice Chancellor in absentia, Professor Amitabh Mitra, Honorable PBC, Rajiv Gandhi University, Honorable MLAs, Sri Eringji and Mampiji, Honorable Former Minister, Sri R.K. Krimeji, Registrar, Dr. N.T. Rimand, members of the speakers in both the panels, esteemed deans of faculties, head of the departments, officers and officials, media persons, research scholars and students, ladies and gentlemen present here. I have been given the responsibility to organize this panel discussion. I join with Professor Amitabh Mitra, Vice Chancellor, to welcome you all once again. We are all gathered here to celebrate the 50 years of Arunachal Pradesh, jointly in collaboration with Rajiv Gandhi University, and the Rajiv Gandhi University has given the responsibility to 4 departments to jointly organize this panel discussion, where Department of Political Science, Department of History, Department of National Security Studies, and Institute of Distance Education has joined together, putting their efforts for organization of this panel discussion. Initially, we intended to go for a seminar, but as we were given the slot on 16th only, and it happened to be a very short period since we were allotted this responsibility, we found it suitable to go for a panel discussion incorporating the experts in different areas of activities and experienced learned people of the state putting together. So we have formed 2 panels. One panel will discuss about the early period of Arunachal Pradesh to the state of Nepal, and the second panel will discuss about the political development issues and channels. We decided to go for this panel discussion keeping in view the various challenges Arunachal is facing today and the scope and opportunity for building a better Arunachal. So, as we all know, the evolution of Arunachal Pradesh as a state and its identity has gone through varieties of trials and tribulations. Arunachal Pradesh, which is a mosaic of ethnic communities, has been contributing towards the formation of the Arunachal identity right from the formation of the Union Territory till date. So the whole process is still in the state of evolution, and I am sure the contribution of all the ethnic communities
living in Arunachal Pradesh will go a long way in providing the Arunachal Pradesh as an independent entity, as a state, though politically it has been, but in real sense, we have to come together to maintain this entity as our identity, and there has been scores of areas where Arunachal is brightly emerging, and the people in different fields of activities have made their name and fame. At the same time, no doubt there are various challenges at different levels, be it of the educational development, be it of the service sector, be it of the climatic changes which is affecting the agriculture as well, be it of the overall development of the state. Everywhere challenges are there. We have to convert these challenges into opportunities and make a vibrant state in the country and make a mark for ourselves. With this, thank you all for your hearing. Thank you very much, sir. Moving on, as we are all aware, this seminar today is a part of month-long celebration. Under this, the Committee of Literary and Sports are organizing 3 seminars charting the emergence of the state identity of Arunachal Pradesh today at the Rajiv Gandhi University, seminar on climate change and sustainable future, the Arunachal perspective with focus on Pakke Declaration at the auditorium of Arunachal Pradesh Legislative Assembly. On the 18th of February, one-day symposium of development and change in Arunachal Pradesh in 50 years, the youth perspective. Along with this, many cultural, literary, sports, and other activities are being arranged throughout this month. And this all have been envisioned by the Honorable Speaker, who is also the chairman of the 50-year celebration committee. We all know him as an able leader, as our Honorable Speaker, but he is a man of innovation. When he was the Minister of Tourism, he revolutionized the way tourism was looked into Arunachal. Now, as the Speaker, he is leading the state into new lights. This 50-year celebration also engages to celebrate the past and nurture the future. This is the ideology which he believes in. With this, I have the honor and the pleasure to please invite the chief guest of today, Shri Prasang Dorji Sona sir, Honorable Speaker and the Chairman of the 50-year Celebration Committee, for his address. Good morning, all the house present here today. With me on the dais, Professor Amitabh Mitra, Pro Vice Chancellor, Professor Panigrahi, Dr. N. Tirikam, and Honorable MLA Sri Ninong, Honorable MLA Sri Haing Mangfi, former Minister Sri R.K. Khrume, and we have Sri Dani Salu, Secretary Government of Arunachal Pradesh, Deans of various faculties, Head of Departments, Administrative Officers, faculty members, all the staff, scholars, students, and media friends. So I'm quite elated to be part of this program today. And as you have been already told that I'm the chairman of the Golden Jubilee celebration of the 50 years of Arunachal Pradesh. So how all it conceived and conceptualized, I'd just like to make a small brief on that. Since Arunachal was attaining 50 years of its identity and naming, the government decided to go in for a celebration. Then in the discussion, we made a suggestion that since it's a Golden Jubilee,
we need to do it in a big way. And it should encompass not only the festivity, it should have a lot of literary session, a lot of workshops, where our youths get connected to it and try to understand our glorious past. Not that we gather in a venue and have a lot of music and cultural programs and see that cultural events, singing and dancing and go away. That's not that should be the part of the celebration of Golden Jubilee, because it's such a big event for us. It's such a proud moment for us to understand our glorious past and what the people of Arunachal envisages and think about, taking our state to a newer height. So the government decided to go in for a month-long celebration, but due to the rise of COVID, there was a lot of uncertainty, how to go about the celebrations, because when we talk about celebration, there will be a lot of people participating, and the COVID protocol was not allowing us to have that kind of, participation, because the SOP came out from the Health Task Force saying only 100 people, that's a maximum capping of the total capacity of the venue. So the inaugural session we had in a very low key at zero, since zero was the place where it was announced, the name was announced, and we had the state identity was given. So we wanted to start from zero and culminate in Itanagar during the statehood day, and wanted to have celebration in all the erstwhile 5 districts, like Lohit, Siang, Tirap, and Subansiri, and Kameng. So, like I said, in between, when we had a lot of uncertainty because of the rising case of COVID. So we did not, take much call on this and how to go about it. So then suddenly there was another SOP from the Health Task Force which says that, okay, you can have the gathering, for the celebration with 50% capacity of the venue. Then we thought, okay, this is the right time, then we should again revive. So we are very sorry to the RGU also that, you have been, rushed, because the decision came in late after the new protocol has come. And anyway, I'm so happy that we are here today, for a very important event today. I know that we are going to have some panel discussion, like we said, talking about the emergence of state identity of Arunachal. We have 2 panel discussions, which is from early time to statehood. So here we have, very senior leaders, Sri R.K. Krimme, who was a minister also and is a long term in the political career. He's a career politician, and we have another very senior politician. He's still the serving member of Legislative Assembly, Sri Ninongining, and he was a former minister also, and he was a bureaucrat also. And from the contemporary side, we have Haing Mangfiji, who will be, participating in the discussion. And obviously, we have a lot of scholars and the resource persons in the panel discussion. So I think, our youths will benefit a lot. And we are live streaming. So I'm hopeful that, a lot of our youths are, watching this program and, watching the panel discussion also. They try to understand how our state, grew from an oblivion to now such a beautiful state. If you talk about Arunachal, I would just like to give a small example what Arunachal used to be for the mainland India during those days. When I was studying in Delhi University, I called a friend of mine. Those days there was no mobile service, so you have to call on a landline. So I called a friend of mine. He said, I just wanted to, one of family member picked up the phone. He said, "आप कहाँ से बोल रहे हो?" Then I said, "मैं अरुणाचल से बोल रहा हूँ." "अच्छा, हिमाचल?" Then I reiterated that, no, not Himachal, Arunachal Pradesh. Oh, acha, Andhra Pradesh. So that was the kind of identity we had. We were like not known to the outside world. But today, I think Arunachal is known not only for the wrong reason. When I say wrong reason, we're talking about
the China's claim of Arunachal, but for many, many positive reasons also. Because we have emerged as a very beautiful state with the participation and with the contributions of our founding members, right from the council agencies to Pradesh Council to till date, where everyone is coming together and put in a lot of hard work and brought Arunachal to this stage. So today we'll be discussing, like I said, when we are celebrating the Golden Jubilee, we need to have a lot of literary activities. We need to have a lot of workshops. We need to engage the youths and the scholars of the Arunachal Pradesh so that we get to understand, we get to know our glorious past and what we plan and what we have a vision for our Arunachal. So that was the whole concept of the celebration, saying the celebrating past and nurturing future. When we're saying celebrating the past, we have such a glorious past. So we need to know, because our younger generation, they have, I think, there's a disconnect. Except for a few people, I don't think many of us don't know our glorious past and who had contributed how much for our state to be this today. And such a beautiful stage and one of the most promising state we are now. All we need to do is we all need to get together. We all need to work together. We all need to put in our hard work to make this state much more beautiful and much greater in days to come. So this was the theme, that we want our youths and our people to understand and know about our glorious past. At the same time, they should be contributing to a beautiful future. So that's how we nurture the future. That also should be part of the whole celebration. We try to invite a lot of things, encompass a lot of things, so that collectively we present to our people something which will be remarkable, which will get etched to their mind, and they become a very positive part in the growth of the state. Because here and there we always see that sometimes there are a lot of negative vibes, being spread by some antisocial elements, and our youth gets diverted because they don't understand the real, the depth of the matter. Just superficially they come in and they join, and later when they realize it's too late. So how do we guide our youths towards a positive direction and involve them in the making of our new Arunachal, much more beautiful, much more stronger, much greater Arunachal in days to come? Because it's our state, we all need to come together as Arunachali. Like I said, you are Arunachali first, then representing a tribe or a community or a religion. So that should be the spirit. Then only I think we can all work together with the common goal for a better and beautiful Arunachal to come. So it's very apt to have this kind of session here in the RGU and, bringing RGU together, because we have so many scholars and students, and you are the future. You will understand things better. You will be able to disseminate things down to the, ground, and where we all, understand our weakness, our strength, and putting it together, we all come together and try to make a better future for our place, our youths, and our state. So today, I must thank all the panel members and the resource person who have come for that discussion, and I would like to thank the university for putting up such a beautiful panel. We have people from all walk of life, from political backgrounds, from the academics, from the media, and you have some. You could have brought someone from the social background also, that could have made a little more difference in the entire discussion. Anyway, nevertheless, it's such a beautiful panel. I think out of this discussion, they will come out with some beautiful things, which we need to, understand about our place, our state, and we all get together to make, like I said, to make Arunachal a much more peaceful, better, and a greater place to live, and be proud of Arunachal in days to come. So with these few words, I would like to again thank the RGU
for inviting me for this inaugural session of today's panel discussion, and I'm hopeful that out of the panel discussion we'll get to understand a lot of things, and we will be getting a lot of materials, to incorporate in the vision documents of Arunachal Pradesh also. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, sir, for sharing your views with us, giving us an idea about how the program was decided, and also for giving us encouragement to go forward into the panel discussion today. I would like to share here that on the 18th, we are also launching Arunachal Against Substance Abuse, which is another program, a part of this 50-year celebration, which the committee has decided to push forward, where the youth would be encouraged to say no to substance abuse. On the 18th in the seminar, the website would be launched, and also we would request all of the participants from today also to register for that event. This was also an innovative idea which sir had come up with, and hopefully this will have a long future. With this, I thank you, sir. Moving on, we are coming towards the end of the program, and I may please request Dr. N.T. Rikam, sir, Registrar of the Rajiv Gandhi University, to deliver the vote of thanks. Ladies and gentlemen, it is a matter of great privilege for me to say a few words as a part of vote of thanks in this inaugural program of panel discussion. On charting the emergence of the state identity of Arunachal Pradesh to mark the golden jubilee of Arunachal Pradesh. In order to mark this significant year in the history of our state, the government of Arunachal Pradesh has earmarked or planned a number of events and programs, and today's panel discussion is one of them. The theme of today's discussion, Arunachal Pradesh from early times to statehood and political development, issues and challenges, are very meaningful and thought-provoking. The presence of Honorable Speaker of Arunachal Pradesh State Legislative Assembly, Sri Pasang Dorji Sonaji, who is also Chairman of Golden Jubilee Celebration Committee, as chief guest has added more grace to the inaugural session of this panel discussion. On behalf of Rajiv Gandhi University, I offer my sincere thankfulness to Sri Pasang Dorji Sonaji for his graceful presence and addressing us with his enlightened words on this occasion. Sir, it is indeed a matter of great joy for all of us to have your presence amongst us in spite of your busy schedule. I must extend my heartfelt thanks to the panelists, Sri Ninong Irengji, Honorable MLA,
who is one of the architect of Arunachal Pradesh, whose father has actually played a pivotal role in making modern Arunachal Pradesh, and he is carrying the legacy of his father, and we are grateful that he is doing right now, and in future also he will be contributing for the development of state. I must thank him for sparing your valuable time to come here and share your experiences today. Then we have Sri R.K. Krimeji, who is one of the architects of modern Arunachal Pradesh, who has actually put his energy in different capacities, from minister to MLA to all positions. We are very lucky to have you today as one of our panel speakers, and will be enlightened by your vivid sharing of experience on the development of Arunachal Pradesh. And we have young MLA Haing Mangpiji, who will be sharing his views, especially the future of Arunachal Pradesh, future of the state. As young member of Legislative Assembly, he will enrich us his plan, his future vision. And Sri Dani Saluji, who is a bureaucrat, he is here as a panelist, will also be enlightened by his views, his vision as Arunachali, as a son of the soil, how he actually foresee or how he experienced well in discharging his duty as a bureaucrat, and also future plans that we are going to have for this state of Arunachal Pradesh. Then all other panelists from media, from the student leader also, I am told that they are invited, then CVOs, and of course from Rajiv Gandhi University, our academicians, Professor Tana Soren, Professor Asan Reddy, and Professor Navam Nakahina. They will be the part of panelists and will enlighten by their words, their sharings pertaining to the state of Arunachal Pradesh. I also wish to express my thankfulness to our Honorable Vice Chancellor, Professor Saket Kushwaha in absentia, who has been actually guiding us all along with his dynamism and all through for the development of Rajiv Gandhi University in particular and state of Arunachal Pradesh. The university also thank him for sharing his wisdom with us via a message. I extend my thankfulness to our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Amita Mitra, for welcoming every one of us on this auspicious occasion and guiding us all through in the university for the interest of this state and the university as well. Our thanks are also due to Professor P.K. Panigrahi, who is chairing the organizing committee, who has actually set the tone of the panel discussion in a concise manner. And I must thank the collaborative departments, Department of National Security Study,
then Department of History, Department of Political Science, and Institute of Distance Education for organizing this one-day panel discussion. I also thank all the deans, heads, members of faculty, officers, and other distinguished guests, and of course media friends for being here with us today on this important events of panel discussion on the state of Arunachal Pradesh. I am confident that in the panel discussion that will follow will enrich us further about the annals of the state Arunachal Pradesh, and will be actually benefited from the sharings, the wisdoms of all the panelists today. Once again, I thank you all for your kind presence, and thank you. Jai Hind. Thank you, sir. With this, we come to the conclusion of the inaugural session of one-day panel discussion on charting the emergence of state identity of Arunachal Pradesh. We will break for tea now, but after that, we have the first panel discussion on Arunachal Pradesh from early times to statehood to be moderated by Professor Tana Soren, sir. In the panel would be Professor Asan Reddy, Shri Ninong Iring, sir, Shri Dani Salu, Shri R.K. Krime. After that, we will have a panel discussion on political development issues and challenges, moderated by Professor Sarit K. Chaudhary, sir. In the panel would be Professor Nabam Nakahina, Secretary of All Arunachal Pradesh Students Union, Ms. Tongam Rina, journalist, and Hayang Mang Fei, sir. I request all of you to please join us again for the panel discussions after the tree bag. Thank you, everyone. Thank you. May I request everyone to please go from this side of the door.
Good morning and welcome back, all the audiences. We're glad to have you here once again for the first round of the panel discussion. Our panelists, the moderators have already arrived, and kicking on further to this panel discussion, I now invite the first panelist, the man who has been a three-time member of Legislative Assembly in the government of Arunachal Pradesh, two-time member of parliament and a union minister, and presently also a member of Legislative Assembly in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri Ninong Iring, to please come on the stage as the first panelist. Carrying forward the legacy of his father, Sri Daing Iring, who is popularly called as the architect of the modern Arunachal Pradesh, who have given Panchayati Raj institution to Arunachal Pradesh. So thank you, sir, for joining us. He came down this morning from Pasigat exclusively to join this program. We are so much overwhelmed. Request Honorable Registrar Sir to please extend this token of love from Rajiv Gandhi University. Thank you so much, sir. Next, I would invite on the stage Sri R.K. Krimer, sir, the former Minister, Government of Arunachal Pradesh, who has started his journey in serving the people in the year 1964 to 66 when he was first elected as the General Secretary of Government Higher Secondary School, Bomdila, then became the Jilla Parishad Chairman in 1972 to 77. And in 1977 to 80, he was elected as the Member of Parliament. Then further committed himself to the social service with in 1978 as Chairman, Parliamentary Committee. And today, standing tall as one of the first generation leader of Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir, for joining us.
He has also came back all the way from New Delhi to join us exclusively for this program. Next, I invite on the stage Sri Dani Sulu sir, the Secretary Government of Arunachal Pradesh. He is the man for the region of which we are all here today. He is the officer who have first brought it to the knowledge of the government that 20th January should be celebrated as Arunachal Pradesh Day. Why? Because this is a day that Arunachal Pradesh was founded. Prior to this, we are celebrating it on 20th February 2000. So it's all because of Dani Sulu sir that this opinionated and the government has took cognizance of this, and we are looking the fruits of his deliverance today. Thank you so much, Sulu sir, for joining us. He has also written several articles in the print media, and also is writing, has several contribution to many small booklets, and is an ardent reader. Next, I would invite on the stage Professor Asan Reddy sir, the head Department of History, as well as the Director of Institute of Distance Education, Rajiv Gandhi University, to be the fourth panelist. The theme for the first panelist is Arunachal Pradesh, from early times to statehood. Thank you, Registrar sir and Reddy sir. Now, to moderate this session, this technical session, I now invite the Dean of Social Science, Professor Tana Soren sir, to please come on the dais and moderate the entire panel discussion. I request the Registrar to bear the honor on behalf of the Rajiv Gandhi University. Professor Tana Soren, who has also been engaging in many social initiatives across the state of Arunachal Pradesh. Thank you so much. Now I hand over the time to the moderator, Professor Soren, to please moderate this session on the theme Arunachal Pradesh, from early time to statehood. So good morning, ladies and gentlemen. First of all, my warm welcome to all the distinguished panelists who have come over here from a different part of the states and to give their best. And we have been given assignment important discussions on the charting the emerging on the state's identity of Arunachal Pradesh, and right now we have a team is given from Arunachal Pradesh from early times to states. So with this, the learned audience, the print and electronic medias, and once again all the esteemed panelists, we are here to mark the 50 years of christening the Northern Union Territory
Northeast Frontier Agency into Arunachal Pradesh in 20th January 1972. So the celebration roll has been kicked off last 20th January recently at Zero, where the Prime Minister Srimati Indira Gandhi came and gave the Arunachal Pradesh a union territory status. And this is a months-long ongoing celebration to mark the 50 years of christening the union territory as an Arunachal Pradesh, and which brought under the Indian unions. So, as all of you are learned, and you must have been seeing in the print and electronic media and social media, that the state government is making all efforts to give repeating celebrations of this 50 years to mark the occasion. But due to the health problem, that is of the COVID-19, certain celebration has been minimal, and it has been, I think, negatively impacted for participation from nook and corner of the states. So I think needless to say much on that, the teams from the early time to present. So we have here most distinguished panelists are there. So I would like to request the code of the presentations, and whatever the thing is given, the 10 minutes each we have been allotted, and I request that wherever whomsoever it is given, and stick to that, and in the between there could be any interactions, we'll make it open. So this states, as you know, a little bit of, I would like to give introductions for make the, I think, heart more warmers, and also to generate some kind of the initiations. Before the Arunachal Pradesh, this state was known as, in the early Puran, that is Kaliki Puran, as a Prabhu mountain. Now, under the rule of Ahoms, for about 600 years, this state was known as a Prabhu mountain, and also the part of the north bank of Brahmaputra Valley. I would say the first colonizers of this Brahmaputra region or the northeast India was the Ahoms, who have come all the way from there, and they have, I think, taken over the reins of the Brahmaputra Valley. And thereafter 600 years, there was checkered political careers and rulings. Then finally in 1826, the British took over the reign of the regions in a partially. But it was after the 1939, the entire Brahmaputra Valley was brought under the British colonial power, and then the foothills areas were not actively brought under the colonial active administrations. So I can, with all confidence, I can say that Arunachal Pradesh was that time serving as a buffer and also as a post office to the colonial administration. That is why you will find there is several regulations are coming in order to contain and maintain the peace, and also the people from the within and outside those colonial officers, like inner line regulations. So from the active administrations of forward policy started from 1914 onwards,
And then entire Arunachal Pradesh of present day was divided into three important sections, that is central and the eastern sector, then Lakhimpur frontier tracts, then of the western section. This was in 1919. Under the forward policy, it was supposed to make an active administration, but the colonial power has to embark on the World War first, and then it remained there. In 1919, after the Treaty of Versailles, it was over, and here these three divisions were further, I think, bifurcated into the western and the central and the eastern portions. That is, Sedia Frontier Tracts was named, and that is called, the main headquarters was in Sedias. Then thereafter, it has, the Lakhimpur Frontier Tract was kept as it is. Then western sections were named as Valipra Frontier Tracts. And thereafter, this was again bifurcated in 1937. These tracts were brought under the excluded area. The whole question of today identity of this territory is that included and excluded issues, which has an inherent legacy of the historicities we have. So then in 1937, the government of India, then colonial government, issued a excluded area to bring all this. And in 1943, these western, that means Lakhimpur Frontier Tracts and the Sedia Frontier Tract. From Sedia Frontier Tract, it was another bifurcation was made, that is called Lohits was here. Then the Lakhimpur was kept as it is, but western was as it is kept. That means Tirap was included, then Por. Then thereafter in 1946, a major reshuffling has been done, that is relating to your Valifra Frontier Tract division has been made into Sela sub-agency and the Savansri areas. Then your Lakhimpur and some portion of the Sedia has been made as it is old name, it is not offending, our hill districts and Mismi hill districts. Then thereafter, Lohits was kept as a Lohits Hills district. And in 1948, these all divisions were created into a districts, and assistant political officers were created, and that way the states became a NEPA under regulation number 1 of 1954 as the Northeast Frontier Areas Administration Regulations 1954 as a NEPA, but the divisions of administration was finally done in 65. Then 67 is a watermarkers of the establishing of Panchayat Raj of active political activities in Arunachal Pradesh, where then headed by a late respected dying Ering. I think today his immediate progeny of son himself is here. Mr. Dying Ering, Ninung Ering is here as a two-time legislator. It's already introduced. So then it has come to the 1986. Very important is the statehood bill, and then 1987 and 20th February it was declared as a state. Bill was approved in the December 26th of somewhere in 1986, but it was officially announced in 1987. So this is, with these notes, I have already mentioned brief of that. So formally I would like to now introduce in my extreme lab Professor Asan Reddy, head of the department, and he is a specialist in modern India and the Northeast India. So he will be one of our panelists. And immediately the Learned Secretary, Mr. Dani Salu, the Learned Secretary of Government of Arunachal Pradesh. Then immediately we have in my extreme next to that, Mr. Ninung Ering. He is one of the leading exponent of the modernities
and also a two-time representative in the Indian Parliament as a Rajya Sabha member and also the legislator on Pai. So, in my immediate next, as Mr. R.K. Kirme was then education minister, and on several occasions he has been in the political mentors for the states crafting. Then he was also represented the states in the union government. So with this, I would like to request and introduce after this, I want that brief notes can be started since from the within we have a house. So I request Mr. Ninung Ering to throw a lights on this start, and then we can keep the ball rolling. Thank you. तो लोग यहीं से बोल रहे थे। हमारे बहुत ही सीनियर और हमारे भूतपूर्व मंत्री रहे प्रीमे साहब, मेरे छोटे भाई दानी साहू साहब और हमारा मॉडरेटर साहब और हमारे प्रोफेसर आसान रिद्धि, शायद एज पर वो आपका बारी था, लेकिन फिर भी क्योंकि शायद मैं सीनियर हूँ इसलिए मैं ही बोल लेता हूँ। लेकिन इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे आप जितने भी यहाँ इतने जो हमारे यहाँ ज्ञानी बैठे हुए हैं, सब हमारे गुरुगण हैं। हमारे छोटे भाई मांगफी साहब है जो हमारा भविष्य है, हमारे प्रो वाइस चांसलर, मेरे युवा बेटा सब जो हमारे आपसू के भी अध्यक्ष हैं और उनके महामंत्री जी भी आए हैं, जितने यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे बच्चे भी कुछ हैं शायद। इस विषय में तो सभी जानते हैं कि नेफा से अरुणाचल प्रदेश कैसा हुआ। मैं एक शख्स हूँ जो 3 जनरेशन को मैं देखा हूँ। जो एंशिएंट जनरेशन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय से, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के समय से या राजीव गांधी के समय से, और अभी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो डायनेमिक और जो एक नया एक भविष्य लेके वो आए हैं, तो ये 3 जनरेशन को मैं देख चुका हूँ। 1961 में मैं दिल्ली में था और मैं जो चीन का जो युद्ध है 1962 का और हमारे 65 का जो युद्ध था हमारा पाकिस्तान के साथ, 1971 में जो हमारे बांग्लादेश का जो वॉर था, उस समय में शिलांग में मैं पढ़ रहा था, और उसके बाद 92 का एशियाड, और उसके बाद एशियाड के बाद ही यहाँ हमारा जो विकास है जो वो ज़्यादा उसमें वो जो एक दौड़ लगाया, और उसके बाद अभी का जो विशेष यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं और किस प्रकार से हमारा अरुणाचल में जो प्रगति की दौड़ में सारा देश का साथ कैसा आगे बढ़ा है, वो मेरा एक अपना तजुर्बा है। क्योंकि 1961 में जब मैं था वहाँ दिल्ली में, तब वो अलग सा चीज़ था। उस समय गाड़ियाँ भी नहीं थी, इनफैक्ट एम्बेसडर वगैरह भी नहीं था, वो लेट में ही आया। उस समय फिएट थे थोड़ा 1-2, और सब बाहर के 1-2 शेवरलेट्स थे, फोर्ड्स थे, वो सब गाड़ी चलते थे, टांगे चलते थे। और दिल्ली का जो प्रदूषण अभी का है वैसा नहीं था। और अरुणाचल प्रदेश उस समय जो नेफा था, उस समय तो वो और भी तकलीफ़ था। इनफैक्ट 1968 में शायद मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी 68 में मैं अपना स्वर्गीय पिताजी के साथ
मैं रेल का पहला जो यात्रा किया मुरकोंग से लेक तक, तो इन सब कहानियों को देखने से शायद मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब सोचता हूँ, क्योंकि मैं 3 जो गैप्स हैं जनरेशन्स का, इसको मैं देखा हूँ। उस समय नेफा में क्या होता था, यहाँ यातायात का कोई सुविधा ही नहीं था। ईटानगर को तो बोलना ही नहीं था, ये तो पूरा जंगल ही था। फिर आलो बोलो या तवांग बोलो या बोमदिला बोलो, उस समय में भी यातायात का बहुत समस्या होते थे। और हमारा तिराप चांगलांग लॉन्गडिंग एरिया में तो और भी तकलीफ़ थी। पासीघाट जैसे जगह में भी आपको वहाँ यातायात का कोई सुविधा नहीं था। लेकिन फिर भी इसको जब आप देखते हैं आज का दिन में, हमारे कितने सरकार आए, कितना सरकार गए, कितना जो भविष्य है उसके आप खुद भी देख सकते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वो कहे थे कि कोट, मैं उनको कोट करूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, I am not at all sure which is the better way of living, the tribal or our own. In some respect, I am quite certain theirs is better. Therefore, it is grossly presumptuous on our part to approach them with an air of authority or superiority, to tell them how to behave or what to do or not to do. There is no point in trying to make them a second-rate copy of ourselves. This is the basis of the policy advocated of functioning between 2 extreme positions of isolation of these tribes on one hand and a total unscientific assimilation on the other. This was the cornerstone of the policy adopted of NEFA. उस समय नेफा का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है, उसी कारण से शायद हम लोग को बहुत सारा रिलैक्सेशंस भी दिए थे वो 1954 में। या उस समय में तो हमारा सिर्फ 5 ही ज़िले होते थे और आबादी भी बहुत कम थी। और उस शुरुआत हम उसी समय से हम लोग शुरू किया, जैसे यहाँ हमारे मॉडरेटर ने कहा कि हमारा पिताजी जो स्वर्गीय पिताजी ने जो शुरुआत की थी यहाँ पंचायती राज का, तो उस समय में उसका भी बहुत लोग खिलाफ जाते थे कि वो सोचते थे कि भाई वो ब्रिटिश राज का समय था या उन राजाओं का समय का जैसे, सो दे वो ऑब्जेक्शंस। लेकिन फिर भी एक ट्रांजिशन पीरियड था, लोग ने उसको अपनाया। फिर उसके बाद एजेंसी काउंसिल हुआ, फिर जो विकास का जो दौर है उसमें पकड़ने लगा। और जो 1962 के बाद हमारा जो भारत सरकार में ने जो इसका पूरा कहानी है, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा हमको दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम पहले एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर थे और फिर उसके बाद में उसको गृह मंत्रालय ने उसको अपनाया। फिर किस प्रकार से हमारा जितने भी हेडक्वार्टर्स थे सब शिलोंग में थे। और फिर उसके बाद किस प्रकार से अरुणाचल को हमको एक नेफा से अरुणाचल प्रदेश होना, वो सब कहानी तो आप सब जानते हैं। और जितना भी यहाँ विद्वान है, शायद जो ये जो आंकड़े जो है वो सबके पास है, क्योंकि हम भी जो आंकड़े निकालते हैं तो किताबों से या हमारा जो गूगल से हम लोग निकालते हैं, तो इस विषय में हमसे आप ज़्यादा जानकारी होंगे। लेकिन किस प्रकार से हमने इसको इतना सदियों में हम अपना समय बिताया, किस प्रकार से मेरे बचपन से आज जो शायद मैं सोचता हूँ कि हमारे क्रिमे साहब है जो हमसे शायद सीनियर है, उनसे जितने भी यहाँ सब हमारे बच्चे और जितने भी यहाँ मेरे दोस्त भी हैं, बिकॉज अभी भी मैं जवान हूँ लेकिन 67 का जवान, तो आई एम स्टिल यंग, बट स्टिल वी कैन से आई हैव सीन ऑल द होल ट्रांजिशन पीरियड राइट फ्रॉम 1960s to this present day of 2022. And we are really grateful to the government of Arunachal Pradesh with the leadership of Sri Pema Khanduji and our Honorable Speaker Sri Pasang Sona, that they have tried to get all of us involved, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो टेक्निक्रेट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को हो, सबको उसको मिला के किस प्रकार से हमको अपना जो बीते हुए सालों को हम याद कर सकेंगे, हाउ वी कैन retrospect, how we can recollect, and with this, all these panel
experts, I'm sure we can have a very fruitful discussion. Of course, if I tell you the story, it will be it is like a history, you know, right? As he was rightly saying, that we had the temple of Tameshwari in the Lohit, then we had a king named Ramchandra, who had, they were, I think, from the Assam, Ahom period, and then there were a king named in Bhalukpong, he was Raja Bana, who defeated Krishna at Tezpur. So these are just stories which we will discuss here, and there are a lot of experts amongst us. But I really appreciate that what we all are going to discuss today about the transition from the NEFA to Arunachal Pradesh, what we have done and what we are still going to do. And we have the young generation here, our young MLA, the young students who will be throwing us a lot of light. And in fact, I'm here as a panelist, but I would really like to hear from you also, and we'll try our best to respond on the issues that will come up and what steps the government should take up, we'll take up in this panel. Mine was just an introduction. So thank you, sir. Thank you. So that was Mr. Ninung Ering, who has just thrown lights on some of the live memories and things which we have experienced, and today as Arunachal Pradesh come as it states. So continuing it, the discussions, now I request Professor Arsan Reddy that he can focus on do really we believe that the British has colonized these states, and if it is colonized, then what exactly they have given to this state today we can proudly call that we have inherited or we have learned something. Is it there somewhere it inherent itself is a problem for today we are facing? Hello. It is afternoon now, so good afternoon to all of you. Respected Professor Soren, moderator, and honorable and respected, really truly gentlemen, Ninung Ering sir, and our respected one of the senior most figure in the state, Architect Mesa, and one of, I think, my contemporary, is a secretary in the government of Arunachal Pradesh, Dani Soloji, and respected audience. And today I have not brought any written script, as like other occasion and seminar and symposium, and just I would like to make an oral presentation, oral discussion. Today we look at the Arunachal Pradesh as a very beautiful state and very potential in every aspect. But Arunachal was not like that. And Arunachal is a history of Arunachal is very difficult. In order to understand the history of Arunachal Pradesh, you need to understand the neighboring country, neighboring states. Its history is related with the Tibet. Its history is related with the Burma. Its history is related with the Assam. Very difficult. So before coming to the main point, I would like to share with you one of my experience. In year 2004, Chinese ambassador in Delhi, he gone to Bombay or Pune. From there, he made a statement that Arunachal is a disputed territory. And within the few months, Chinese Prime Minister claimed that Arunachal is a Chinese territory. And those days, I was one of the
regional activist. I was General Secretary of Arunachal Congress at that time. I wrote one article in Arunachal Time. It was published. I said that historically, Arunachal doesn't belong to China, nor belong to India. But at present, territorially, politically, and geographically, Arunachal has been integrated into India. Now it is a part and parcel of Indian sovereign state. Why India do not claim that Arunachal belong to us? Why they do not claim that? Why they do not integrate us emotionally, socially, economically also? And that article was published. Thereafter, I went to Shillong to attend one of the seminar, and then I got a phone call from my home state, Itanagar capital, that many intelligence agencies are after you. I don't know why they were after me. It was maybe because of reason that Asandidi belonged to Arunachal Pradesh. If I would have been belonged to any scholar from the mainland country, they should have ignored it. It's kind of the academic view. But they have taken it seriously. This I am sharing it that because Arunachal was never part of any country historically. And Arunachal had no king and queen, no dynasty, except some chief in wherever there is a chieftain system. Take example of Lomding, Tirap, and Sanglang. Only tribal chief. They are not so powerful. But Arunachal survived as an independent territory. Strongest Ahom king could not conquer Arunachal. Tibetan state could not conquer Arunachal. Burmese government could not conquer Arunachal. And then Bhutan, just our neighboring country, they could not conquer Arunachal. Arunachal survived as an independent territory. And rather, people of Arunachal used to collect taxes from some neighboring people and neighboring country. Take example, people from Lambeking and Taksing, they used to collect taxes from the Tibet. And last tax was collected in 1956. And Arunachal people used to collect taxes from the Assam. And Arunachal people claim that I am sitting in the hills. And Put Hill is, I have right to put my put on the hill, Put Hills, claim. So property belong to the Put Hill, I have a right to share. I have a right to claim. And when Ahom king do not agree with that claim, people from the Arunachal Pradesh, they came down to Assam and taken away whatever they think this is our right. And Ahom king tried to send expedition, give a punishment, and many attempts was made, but they desperately failed. Ultimately, they officially agreed that, yes, you have a right. You come and collect something from us. And some peoples were identified with a certain group of the people. You collect this item from them. And from this side, if I talk from this Balipra side, Sardukpen, Aka, Nisi, and even Adi. Adi had a certain claim. They claim that whatever resources in Put Hills, maybe it is gold, maybe it is a forest resource like a rubber, maybe it is a fish, maybe it is an elephant. Our shares are there. If you are collecting, that means you have to pay us a share, taxes. And similarly, it go up to there, even in this Tirap Sanglang area, the land right was given to them, which was called Nagakat. So they were collecting these taxes from the home government. And when British came to Assam after the 1826 Treaty of Yandabo, and when British annexed the entire Assam,
they come across such a difficult kind of relationship between the people of hills and the Assam. Home territory become a British territory. British think that this is our territory. Whoever citizen inhabited in British territory, that is, they are our citizen, and this is our rightful right to protect them, protect their property, protect their life. But hill people of Arunachal Pradesh claim that, no, we have been collecting the taxes from them. We will collect them. And wherever there is a problem, when the people of the plain, Assam, when they got the protection from the British government, British law, sometimes they reluctant to pay the taxes. And because of that, our people, ordinary people, raided into the Assam, kill the people, and take away the people as captive, take away the property. Then British sent an expedition team. In case of this, take example of the Aka people. In history, it is written as a Tagi Raja, but it is, whether it is Tagi Raja or we don't know, we have to ascertain it. And as early as in 1829, he attacked the British officer in Balipara and killed him for reason not paying, allowing the people to pay him the taxes. And there was many raids and counter expedition. Ultimately, he was arrested, but later on he was jailed in Guwahati. Later on he was again released. After getting released from the jail, and he was supposed to be in the plane, but he fled back to the hills. And again from inside the hills, he organized his people and made another bigger attack, 1937. And entire Assam in light infantry was massacred. Around 27 people was killed. And that process will continue. Imagine 1829, he attacked the British. And ultimately, British government has to succumb to his tactics. And they made an agreement, and as per agreement, and the British agreed them to pay an annual payment of 360 rupees. During those 1837, 360 was a huge amount. British government used to pay them. And coming to this side, and there was many problems regarding this with the Nisi. Take example of many raids, and this expedition was taken place, and it will be long for if I go to discuss them. And if you go to the Adi area, different kind of problem. Those bias, they called the gold washer or peace collector, bias, who were settled in the foothills, when they got the protection from the British, they migrated from the foothill to the lower down. Then Adi people said, especially bias and miris, they said, you are my subject, you have to pay me. They said, no, we will not pay. And they migrated back to the further to the you plain. can make your next final review. So that is introductory. You can make. We can go to the next another final. Okay, then Yeah. I have many things to share with you, but time is short. No, okay? one more round. Hello. So this was this kind of the relation. Mean to say there was a conflict of the authority over the resources, over the people. Even British could not do that. And take example of the Kamti Rebellion of the 1939. And before the 1857 Great Rebellion of the India, our people have revolted. Take example of the Singapore Rebellion of the 1842 to 44. And major rebellion was taken place. British didn't find any compatibility with the people. Therefore, British decided to keep this part of land as an excluded territory, excluded area. Under the Act of the 1935 and the Act of the and they wanted to make it the isolation. Isolation means to say they don't want to interfere with the real people. And because of this after the Simla Agreement, this 1873 Regulation Act of the 1873, which is called the Inner Regulation. This Inner Land Regulation is a regulate that
limit the political territorial jurisdiction of the Deputy Commissioner of the British, not restricted the hill people. We were free to move anywhere. But they said that they are subject, they said that British subject, you don't go beyond to the inner land. If you go to inner land, if anything happen to you, yourself will be responsible. We will not take responsibility. And if they come to our territory, cross the inner land, anything happen, we are responsible. We'll take care of you. And that is the inner land regulation is the restriction of the political and administrative jurisdiction of the British officer, not restriction to our people. And so this is the one landmark. Okay. Thank you. What the Professor Hassan articulated, the checkered, the political history of how the colonial and the existing, the present state has that's evolved. And now we would like to listen from one of the veteran, the political practitioners, I would say politicians. They are more grounded than that of the theoretical. Mr. R.K. Krime is here. He was education minister also. And he is also very actively engaged in a cultural ethos and identities of connectivity with this Tibetan cultures, and then that of our cultural relations and historical relations. So he is a forerunner in developing a composite pan kind of the East Asian Himalayan cultures. So he would be, I think, throwing how today the Arunachal is seen, that we are within ourselves in the identity crisis. That crisis is that when you go to the south or the north, by not a fault of us, but by virtue of our facial looks and morphological and physiographical issues, so many words are used against, and sometimes that is taken as literally an identity, and within in states also. So since you are having that kind of, is there anything that this state can contribute to the pan-Indian composite culture, despite the, we are ourselves is just suspecting? So I would like to request R.K. Krime to throw on this in his introductory remark, and we'll have a panel. The next round, one panel sum up short we'll have. मैं आपके पैनलिस्ट दोस्त और दर्शक जितने हैं आज, आपकी इजाज़त से मैं तो वहाँ से बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट जब हमारे इंटरेक्शन होंगे तो मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करूँगा। Respected Professor ताना सोमरेन जी, जो आज हमारे इस डिस्कशन का जो मॉडरेटर है, बहुत माननीय और मेरे प्रिय भाई निनोंग इरिंग जी, जिसके बारे में आप लोगों को सामने बताया कि सांसद भी थे, मंत्री, यूनियन मिनिस्टर भी थे, अभी फिलहाल में यहाँ के विधायक भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे बीच में मिस्टर दानी सालू जी है जो ब्यूरोक्रेट है, और उसके बाद प्रोफेसर आशा रेड्डी जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री है, आज हमारे पैनल में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आज इस अवसर पर हमारे जो दोस्त या मित्र थे उस समय में जब शुरुआत किए, अरुणाचल दीफा से हम लोग शुरुआत किए, बहुत सारे दोस्त आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं आंतरिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि उनको भी बहुत योगदान है। आज जहां हम खड़े हैं, जहां हम अरुणाचल बोल के बोल सकते हैं, उनके भी बहुत बड़ा योगदान है।
तो मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जहाँ भी है, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, हम विश्वास करते हैं रीबर्थ का, अच्छे कर्म किया है, अभी तक तो शायद उनका पुनर्जन्म आ गया होगा। जहाँ भी है सुख रहे, शांति रहे, ये हमारे प्रार्थना है। दूसरा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि 50th ईयर ऑफ द अरुणाचल जो नेमिंग किया गया, अरुणाचल है बनाया है, उस पर भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला है। और इसके लिए हमारे जो स्टेट के सरकार, पेमा खांडू जी जो हमारे नेता है, ऑनरेबल स्पीकर जो हमारे जो आज बीच में थे, जो भी यहाँ के इस सेलिब्रेशन के जो चेयरमैन है स्टेट लेवल कमेटी का, और स्पेशली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जहाँ जो वाइस चांसलर है, प्रो वाइस चांसलर्स है, अदर फैकल्टी मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, डिपार्टमेंट्स का है, और स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने बहुत दिल से चाहा कि क्योंकि ये हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे स्टेट का, और आप लोग भी भाग होना 50th ईयर में लेना, आपने सही समझा, सही तरह से आपने काम लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी अपने भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं, वो जब मैं बहुत एक्टिव पॉलिटिकल करियर में था तो शायद कोई तो बहुत छोटे होंगे, कोई जन्म भी नहीं किया होगा, तो मुझे वैसे तो आर के खीमे बोल के सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो पूरे जो पुस्तक नाम है, मुझे रिंचिन खंडू खीमे कहते हैं। और मैं वेस्ट कामेंग को हूँ, रूपा गांव का है, अभी बॉम्बदिला से 18 किलोमीटर पहले आते हैं। इसकी इतिहास मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे प्रोफेसर तारा सोरेन जी ने कहा कि जिस तरह से पहले जो पालीपरा ट्रैक हुआ था, उस समय में जब सबसे पहले जो वहाँ में जो कैपिटल अरुणाचल नीफा भी नहीं था, पालीपरा ट्रैक में आया था, तो रूपा में इस्टेब्लिश हुआ था। मेरे पिताजी को, हमारे पिताजी को, स्वर्गीय पिताजी, बहुत छोटी उम्र 1937 में एक कागज देखा था, उनको गांबरा ब्रिटिश सरकार ने उसको नियुक्त किया गया था। उन लोगों का बहुत हाथ है फ्रीडम स्ट्रगल में भी, उन्होंने साथ देना, साथ जाना। वहाँ जो महात्मा गांधी असम में आए थे, 4 द्वार तक आए थे, उनको पैदल रात दिन जाके वहाँ उनको दर्शन करना, उनसे बात सुनना, इस तरह से मैं बात सुनते आ रहा था। तो एक वो वहाँ सबसे पहले ये रूपा में हुआ करता था, उसमें जो हेडक्वार्टर, बाद में जब ये परमानेंट कैपिटल राजधानी उसका ये एक हेडक्वार्टर बनाना है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है, या उस समय में कामेंग डिवीजन जो शुरुआत हुआ है, तब उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा ज़मीन चाहिए। तो बॉम्बदिला हम लोगों का ही ज़मीन था, मतलब रूपा सेडुकन इलाके का, उनको वहाँ दिया गया है। तो मैं शुरुआत से ही, जब से स्टूडेंट्स था तब से बड़ा एक्टिविस्ट था। हम लोगों के समय में परिस्थिति अलग था। परिस्थिति इसलिए अलग था कि कोई इलेक्टेड सरकार भी नहीं था, कोई हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई नहीं था। जो कुछ भी जानकारी है वो स्टूडेंट्स के जहाँ हाई स्कूल्स में जहाँ पढ़ते थे, हम ही लोगों को ही पता चलता था, और हम लोगों को ही आवाज़ उठाना पड़ता था, क्योंकि जो गाँव बड़ा थे वो तो नॉमिनेटेड था, सब अपॉइंटी था, सब पॉलिटिकल ऑफिसर्स लोगों का, सरकार का अपॉइंटी था, वो तो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो जो कुछ भी तकलीफ अपने एजुकेशन से लेके, एजुकेशन का तकलीफ से लेके स्टेट का भी कुछ समस्या होता है। एक मीडियम इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों को समय बहुत जोर से आया, कभी क्योंकि वो ट्रायलैंगुलर फॉर्मूला के मुताबिक, कभी आज कहता है कि ये हिंदी हो गया, कल बोलते असामीज चलता था, असामीज हो गया, फिर अंग्रेजी हो गया है, साल बदलते रहे। फिर हम लोगों ने उसके बाद एजुटेशन किया, एजुकेशन करने के बाद में अंत में जाके इंग्लिश को जाके यहाँ में हमारा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन शुरुआत किया गया, और बहुत यूनिक है अरुणाचल में, क्योंकि इस परिस्थिति के वजह से ही पूरे देश में स्कूलों में यूनियनबाजी नहीं होता है, लेकिन अरुणाचल में देन कॉल नीफा, उसके पहले नीफा में भी शुरुआत हुआ है। और मैं वहाँ का एक एक्टिविस्ट था,
मेरे बड़ा उसमें एक्टिविस्ट होने की वजह से मुझे तो सिस्टम ऐसे होता था कि यूनियन में स्कूलों में जो क्लास 9 में होता है उसी को ही जनरल सेक्रेटरी साल भर बनाया जाता था, क्योंकि क्लास 8 तो छोटा हो गया, क्लास 10 तो उसको फाइनल परीक्षा देना पड़ता था। मुझे मेरे ख्याल में मेरे स्वभाव मैं थोड़ा ज़्यादा चंचल था, इसलिए मुझे क्लास 8 में उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 9 तो करना ही था, क्लास 10 में भी उन्होंने नहीं बदला। तो मेरे अपना स्कूल में जो इतिहास है कि मैं 3 साल तक कंटिन्यूसली जनरल सेक्रेटरी रहा हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में। और दूसरा अचीवमेंट मेरा ये था कि मैं हमारे समय में मैट्रिक परीक्षा देना बहुत बड़ी बात था। हम लोग असम बोर्ड में आके देते थे और असम में आके परीक्षा देते थे। मैं 6th बेस था अनडिवाइडेड कामेंग, जो अभी तवांग है, ईस्ट कामेंग है, वेस्ट कामेंग है। 6th बेस मैट्रिकुलेट देता था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट बना अनडिवाइडेड कामेंग का, फर्स्ट ग्रेजुएट बना। तो ये मैं अपने बारे में तो 2-3 बातें आपको बताया। अब ये जो यहाँ में मित्रों, ये जो आज का जो सब्जेक्ट है सेलिब्रेटिंग पास्ट एंड नर्चरिंग फ्यूचर के बारे में और इतिहास, मैं तो आपके सामने थोड़ा ये रखता हूँ, क्योंकि ये 1972 में बाकी बातें तो काफ़ी लोगों ने कहा है, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहूँगा। 1972 में 72 तक 1967 में पार्लियामेंट में पंचायती राज हुआ। मैं बहुत सही बात है, दाई गिरिंग साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है शुरुआत में। मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था उस समय में, 60s में, 67 में वहाँ ज्वाइन किया। उस समय में इरिंग साहब ये मंत्री थे, और जब उस समय में कम्युनिकेशन आज की तरह था, प्राइवेट एयरलाइंस तो छोड़िए, इंडियन एयरलाइंस में 1-2 तो चलता था। तो जब भी वो आते थे, दिल्ली जाते थे तो कलकत्ता हॉल करना पड़ता था। दिल्ली से जब अरुणाचल आते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न आते हैं तो कलकत्ता हॉल करना पड़ता था। और जब भी हॉल करता था मैं जाके जरूर मिलता था। तब ये पूरे राजधानी पूरे पॉलिटिकली बातें बताते थे, पंचायती राज शुरू करना है, इस तरह से करना। बहुत ऑपोजिशंस थे। आज मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। शुरुआत उनके हाथों से हुआ, पार्लियामेंट में थे, वहाँ से शुरुआत हुआ। उसी से हमारे जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, आके आज तक स्टेटहुड जब आया मिला है हमें, उनका शुरुआत है। तो उनको हमें नहीं भूलना है। यही आज के दिन में याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी समय है उसको। तो 1972 में एजेंसी काउंसिल 69 में बने। उन्होंने रेजोल्यूशन द्वारा, जब मैं पहले वक्ता ने बताया कि रेजोल्यूशन करने की वजह से अरुणाचल नाम हुआ। 72 में अरुणाचल नाम जब हो गया तो प्रदेश एजेंसी काउंसिल की जगह प्रदेश काउंसिल हुआ। उसी साल मैं इलेक्टेड हो गया जिला परिषद मेंबर। तो मैं जब आज कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो 50 साल तो अरुणाचल का सेलिब्रेशन हो रहा है। मेरे भी राजनीति में 50 साल हो गया अभी तो। 72 में ज्वाइन किया और 72 में यहाँ हो गया, तो ये तो मैं भी 50 साल हो गया। तो मुझे तो अभी लगता है कि ये कल की बात है। अभी सुनने में तो लगता है कि आप लोगों के लिए लगता है कि यार 50 साल हो गए, लेकिन कल की बात है। बहुत आगे हम लोग आगे बढ़े और हमें प्रदेश काउंसिल देने के 72 के बाद 1975 में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ हमारे स्टेट पे। एक तो पार्लियामेंट की वजह से यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी के अंदर में ही स्टेट असेंबली दिया गया। उस स्टेट असेंबली में 30 मेंबर असेंबली इलेक्टेड दिया, 3 मेंबर नॉमिनेटेड थे, 33 मेंबर का हाउस बनाया। और पहले एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नॉमिनेट होता था, उसको खत्म करके 2 पार्लियामेंट्री सीट दिया। ईस्टर्न पार्लियामेंट्री 1 वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 सीट दिया और एक राज्यसभा दिया, एक राज्यसभा सीट दिया। तो जबकि हमारे असेंबली को 1975 में जब ये एक्ट पास करने के बाद जो प्रदेश काउंसिल था उसको एलिवेशन किया गया प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
जब असेंबली हो गया, एमएलएस बन गए, तो राज्यसभा सीट खाली था, इसलिए तोदाक बसार तोदाक बसार जो बाद में मंत्री भी रहे, उनको वो सबसे पहले हमारे राज्यसभा का मेंबर बन के चले गए। और जब 1977 में फर्स्ट इमरजेंसी के बाद में जब इलेक्शन आए, लोकसभा के इलेक्शन आए, तो मैं वेस्टर्न पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड मेंबर, मैं फर्स्ट हूं। और ईस्टर्न नंबर 2 ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे वो, मैं तो कांग्रेस कैंडिडेट था, और उस समय में वो जो हमारा कांग्रेस ईस्टर्न पार्ट में योदक यांगम जी को दिया था, उनको वहां वो नहीं हो पाया। उनके वहां से बकीन पार्टी जी, लेट सर बकीन पार्टी, वो इंडिपेंडेंट, बाद में जो उन्होंने पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल भी बनाया है, अभी जो पीपीए बनाया उनका बनाया हुआ है, वो वहां से उनको वहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले अब बात आया कि स्टेटहुड कहां से शुरुआत हुआ। मैं आपको बताता हूं, हम लोग मैं वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बन गया, बाकी पार्टी से ईस्टर से बन गया, तो बसार जी फिर वो उसके राज्यसभा में गए। उस समय मुख्यमंत्री साहब मिस्टर पी के थुंगन, जो प्रोविजनल में था, वो प्रोविजनल असेंबली का वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके डेलीगेशन लेके आए दिल्ली में विद मेमोरेंडम टू द प्राइम मिनिस्टर। 1977 के बाद बता रहा हूं मैं आपको। वहां उस डेलीगेशन में उनका ये था, क्योंकि हम लोग का तीनों रिप्रेजेंटेशन अरुणाचल में थे, लोकसभा में 2, राज्यसभा हम लोग भी ज्वाइन किया। हम लोग जाके तब हमने पूछा, बोला कि स्टेटहुड डिमांड के लिए हम लोग सब दस्तखत किया करके जॉइंट मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने सबमिट किया। उस समय प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जी ने सबसे पहले तो बहुत जोर से कहा, वो एक बात मैं आपको बताता हूं, आप इतिहास है, आप लोग बहुत बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत ट्राइबल की तरह सीधा बात करते थे वो, तेरा मेरा नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बहुत सीधा बात करते थे, अच्छा लगता था उनके साथ बात करने में। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब दिया, हाँ जी क्या बात है, बोला हमारा प्रदेश, हमारा स्टेट मांगने के लिए आया, आपके सामने रखा है, इसके बारे में बोला। तो उन्होंने, उनका सबसे पहले जवाब था, माई बेसिक डिफरेंस, कोट तो प्रधानमंत्री का हो, माई बेसिक डिफरेंस विद नेहरू जी वॉज, ही वॉज इन फेवर ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स एंड वेयर आई एम नॉट। तो फिर हम लोग तो चुप बैठे, सुनते रहे। फिर हमें कहा कि आपको पैसा चाहिए या पावर चाहिए, कहा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो पैसा ही पैसा है, वो सरकार से, सेंट्रल सरकार के अंदर में है। अगर वो स्टेट हो जाता तो अपना है। मैं आपको बहुत छोटा सा हमारा यंग जनरेशन उदाहरण देता हूं। आपके बाप घर में, बाप के साथ जब तक आप है तो बाप का जिम्मेवारी है, आपके अगर बीबी लेके आया है तो बाप की जिम्मेवारी है, आपके अगर वो पोता पोती हुआ तो बाप का जिम्मेवारी है, वो सब कुछ देख सकता है। जब भी वो बाहर चले जाएंगे, इमरजेंसी के समय ही आपका बाप आपको ख्याल कर सकते, नहीं तो आपको अपना देखना पड़ेगा। उसी तरह से स्टेटहुड बनना भी इसी तरह से उसी कार्यक्रम में आता है स्टेटहुड। तो वो स्टेटहुड उन्होंने तब सही बोला कि आपको पैसा चाहिए या वो उसके पावर चाहिए। खैर हमने तो कहा दोनों चाहिए हमें, तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला था, बीच में कहा दोनों चाहिए, दोनों नहीं हो सकता है। मैंने कहा हम लोग बॉर्डर इलाके का, हमारा लिए तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा, पूरे देश में तो नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे लिए हो सकता है। इस तरह से हमारे बीच में उसको शुरुआत, मेरे आपसे ये कहने के बाद ऐसा था, शुरुआत वहां से हुआ। दूसरा, हम लोगों के पास में क्या स्ट्रेंथ था हम लोगों का, अरुणाचल का आइडेंटिटी बहुत बड़ा था। हमारे यहाँ के बहुत लोग जानते हैं कि यहाँ 26 या 32, 30 मेजर ट्राइब्स है, बाकी सब ट्राइब्स है, लेकिन एक दूसरों को बहुत तरह से टोटल नंबर भी हमें मालूम नहीं भी होता होगा, लेकिन हम लोग आपस में एकता बहुत बड़ा था। हमारे कल्चर जो हमारा एज ओल्ड जो हेरिटेज था वो बड़ा मजबूत था। Sir, you can make next round. This is your introductory. We'll have, and you please take your तो seats. इस तरह से करने के बाद वो हमें बहुत मजबूती हुआ, इसकी वजह से हमें वो मिला। मेरा यही इस डिस्कशन के अंदर में यही है कि मुझे ये एक ही बात है,
हम लोगों ने, आप लोगों ने कहा है कि द चैलेंजेस हम लोगों के सामने, स्टेटहुड तो बने, चैलेंजेस क्या है? मेरा अनुरोध या आप एडवाइस समझें या वार्निंग समझें, देखिए हाँ, अरुणाचल का बहुत बड़ा, मैंने जिस तरह से कहा ना, हम लोगों का रिच कल्चर था, रिच हेरिटेज था, पास कल्चर वॉज वेरी स्ट्रांग। एक दूसरों को हम लोग अरुणाचली बोलने से एक साथ हो जाता था। अभी विथ माय एक्सपीरियंस इसी पॉलिटिकल एज का अरुणाचल में देखते रहता हूँ कि इस जो चीज जो हम लोग एक हम थे उसका हम में बदल गया है, धीरे धीरे इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है हम लोग। Now, sir, you can take your seats. We'll go for the next panel. Yes. तो इसी का ही मैं आपका कह रहा हूं कि यही हम लोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इस चैलेंज को आगे आने के लिए हमें सबको विचार करना पड़ेगा। तब मैं समझता हूं कि हमारा फ्यूचर, अरुणाचल फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. We'll have a second round. So now we heard from the former ministers, very, I think, succinctly and very elaborately articulated how we have come up to this stage, particularly the becoming a statehoods and some political mobilities. So today, somewhere in our contemporary narratives, and here many youths are also here, the student representatives and other groups, they feel that Arunachal Pradesh attaining early statehood itself is a bane. And somewhere we have got the wounded statehood bill. So, being a civil servant, Mr. Dani Salu, are you happy with the kind of statehood today we are getting, or we could have been something more better than this? So I just wish you can throw on light on this, and thereafter we'll go for this next round and something more different. Okay, please go ahead. You can make your introductory and then you can insert. Thank you, Professor Tanasuri. Our most respected and one of the senior most leader from Arunachal, Sri R.K. Krime sir, most experienced and one of the most articulate leaders, not only from Arunachal, I should say. We have seen him on the national stage also, Nasanka, Ninong Ering sir, my friend Professor Asan Reddy, the professors of Rajiv Gandhi University and the students. It's my privilege to be amongst you. When this program was conceived of having symposium, we had some other idea, a bit more elaborate and all, but because of COVID, I think this has been shortened and we are having it in a very short time. Maybe if COVID was not there, we would have had it in a more elaborate day. Elaborate way. Well, when I was given a letter, when I received, I said it will be, the topic will be from 1969, that is NEFA to statehood. But then when I came here, it's from the earliest part of Arunachal till the statehood day. A bit थोड़ा सा disorient हो गया था. Still, today I come here not because I have lots to share, but because I'm expecting there is lots to learn from you all. In due course of interaction, hopefully I'll learn. The question on statehood day, whether it's early or whether we should have had it or we should have waited, our moderator has asked me. Well, I'll start then, top down I'll start. Was it good that we got a statehood? I would say yes, definitely.
And then the second thing he asked was, is it the wounded statehood? Yeah, definitely. It's a statehood we got. In fact, 87, we should have got along with the rest of Meghalaya, Manipur in 1972 itself. I think we should have got it with all the protection that was given to the Nagaland, the Meghalaya, त्रिपुरा जहाँ जहाँ स्टेट में जिस तरह का दिया है उसका हमको 72 में दे देना ठीक था। पर लेट आया, अच्छा आया, लेकिन पूरा तंदुरुस्त से नहीं आया। When 1987 में दिया है, it was a wounded. Many of us, when Article 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को जब स्क्रैप कर दिया, यहाँ में काफ़ी हंगामा हो गया था। कहीं 371H हम लोग जो स्पेशल वाला जो है उसको कहीं स्क्रैप नहीं कर दिए, लेकिन जो लोग उनका प्रोविज़न को जानता था उन लोग सोच रहे थे इसको स्क्रैप कर दे, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोहिबिटिंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमको हमारा ज़मीन को डिनाई करता है, हमारा हवा को डिनाई करता है, हमारा पानी को डिनाई करता है। नॉट ओनली दैट, इवन वी से हम कल्चर एंड कस्टम का मुताबिक हम 3 शादी कर सकता है, ये है वो है, इवन दैट इज ऑल्सो लिमिटेड अंडर दैट आर्टिकल। सो टॉप डाउन करने से मैं उधर से बात करते हूँ। मे बी इनकेस अभी उधर से 30 years हो गया, वी हैड सेलिब्रेटेड, नाउ इट्स 35th year, मे बी इट्स टाइम दैट वी शुड टेक ए सीरियस लुक। पहले भी हमने देखा है 2014-15 को भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने भी लिखा था इनको नागालैंड का बराबर, मिजोरम का बराबर हमें दे दो राइट्स को। उसका ऊपर में कोई एक्शन नहीं हुआ है। मे बी इन टाइम्स टू कम आवर प्रेजेंट लेजिस्लेटर इज ऑल्सो देयर एंड मे बी मेनी ऑफ यू विल बी ज्वाइनिंग देयर ऑल्सो। जब आएंगे देर पॉलिटिकल विल एक नया जो चाहिए है वो इस जगह में चाहिए अरुणाचल को, जहाँ हमें हमारा ज़मीन का हमारा राइट हो, जहाँ हमारा पानी का हमारा राइट हो, जहाँ हमारा हवा का हमारा राइट हो, वो अब हम में नहीं है। वी हैव बीन डिनाइड। तो इसको शायद हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ के ये करेंगे, अमेंडमेंट के लिए कोशिश करेंगे आगे जाके। बट देन इट्स फ्रॉम द अर्ली जस्ट आई जस्ट टेक 2-3 minutes। मैं जैसा बोला मैं सोचा मैं शेयर तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा मैं शेयर कर लूँगा, लेकिन आई वुड लाइक टू नो मच फ्रॉम यू ऑल। आई कम हियर विथ मोर कन्फ्यूजन देन क्लैरिटी। जब अरुणाचल हिस्ट्री बोलते हैं तो यस, मैनी से देयर इज ए हिस्ट्री, बट व्हेन आई पेरिश थ्रू द बुक्स रिकॉर्ड, मुझे तो अरुणाचल ऐसे कॉम्बाइंड हिस्ट्री ये है बोल के मुझे तो कहीं नहीं दिखा देता है। इट्स ए यूनिक, वेरी यूनिक आइडेंटिटी। आई शुड से इट्स ए मिनिएचर ऑफ इंडिया। इंडिया भी पूरा दुनिया में करेंगे तो इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं है, और स्टेट में देखा जैसा तो अरुणाचल जैसा कोई स्टेट नहीं है। व्हाई? अरुणाचल जैसा इंडिया भी, इंडिया का वहाँ के वासियों का डिमांड से नहीं हुआ है। इंडिया आज देख रहे हैं तो एक ब्रिटिशर आया, उन्होंने एक कॉन्टिनेंट को रूल किया और वो कॉन्टिनेंट एक कंट्री हो गया। वैसा ही अरुणाचल ऑल्सो, कहीं हम लोगों ने एकजुट करके हमें अरुणाचल ऐसे सोसाइटी चाहिए बोल के ऐसे स्टेट करके कहीं कभी डिमांड नहीं हुआ। बट वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्लूशन, वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ deprivation, and we are a product of one identified geographical social area which the Britishers saw as a what? Not something to grow, something to protect themselves as a buffer state. वो रखा, वहाँ से एक आइडेंटिटी हमारा हुआ है, एकजुट, हमको एक जगह में बंद कर दिया है। तो ये कहाँ से शुरू हो जाता है? Where is it, where the isolation started? Or else, where is it that the decision was taken, इनको isolation में ठीक है, हम इनको नहीं छूते हैं बोलकर। For that, पहले भी हमारा प्रोफेसर तानासुरन ने बोला, थोड़ा सा जिसमें दिया है, we first find 1873
बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जहाँ में इनर लाइन परमिट का जो जिक्र किया गया है, दैट वाज नॉट टू प्रोटेक्ट अस। हम लोग सोचता है ILP हैज़ बीन डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस, दैट वाज नॉट टू प्रोटेक्ट अस, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश सिटीजन्स। वो हमें प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बट देन इट हैज व्हाट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी तक उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, वो अभी तक हमको प्रोटेक्ट करके आ रहा है। इट हैज बीन ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड देन देर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये सब करते रहता है, बट देन दैट ऑल्सो इज वेस्टेड विथ ILP कहाँ कैसा करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टेड है। वो एक है। सेकेंडली देर वॉज नोटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए जोग्राफिकल, हम लोग का यूनिफाइड कोई नहीं था। सेकेंड 1880 में आता है, बट देन और एक जो आता है 1914, बट देन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक जो है विच वॉज ए प्रिकर्सर ऑफ नेफा, वो 1919 में हमको दिखाई देता है। 1919 में जब दिखाई देता है, उसके बाद नेक्स्ट इज अभी 1936-37 का जो इलेक्शन होता है, 44 का हो जाता है, 50 का हो जाता है। द क्वेश्चन इज व्हेन डिड वी बिकम नेफा? क्योंकि हम लोग पहले तो नेफा से जानता था, लेकिन नेफा कब हुआ है? माई क्वेरीज आर बिट स्मॉल, ज़्यादा ये नहीं है। कभी रिफ़र करता है 1951 में हुआ, और ज़्यादातर करता है 1954 में। आई रियली ट्राई टू गो थ्रू, काफ़ी मैंने भी कोशिश किया कि इट वॉज 50 ईयर्स हो रहा है, कहाँ से किस तरह का ग्रो है। मुझे कोई डेफिनेट सोर्स वेयर आई कुड पॉइंट माई फिंगर एंड से दिस इज द डॉक्यूमेंट जहाँ से नेफा शुरू हुआ था बोल के, वेयर द रेफरेंस स्टार्टेड। वन इज राइटली आई गो थ्रू इन 1954 में मैंने थोड़ा सा देखा है कि ये है। देन इसके बाद 1965 में आ जाता है, 65 में आ जाता है, वेयर द डिस्ट्रिक्ट्स वे क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ द डिवीजन। देन 1964-65 डाइंग एरिंग पंचायत ये कमिटी का जो रिकमेंडेशन आता है, विच वॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1967 एज नेफा पंचायती रेगुलेशन एक्ट 1967। द फर्स्ट इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 1969, जहाँ से जो वहाँ से हमारा आई थिंक जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी केयरिंग since 1969. they have been quite caring. आप ये देखें कैसा करके हमको यहाँ तक लेके आया है। 69 में पंचायत इलेक्शन हुआ और टॉप मोस्ट में एजेंसी काउंसिल दिया, नो पावर, ओनली एडवाइजरी, जस्ट चलना सिखाया। इट वाज जस्ट बच्चा को अंगुली पकड़ के चलना जैसा सिखाया। सेकेंड इलेक्शन हुआ 1972 में, देन दे वर गिवन सम पावर्स। वहाँ से आउट ऑफ दैट काउंसिलर बनाया, जो मिनिस्टर का अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रीकर्सर है, एक चीफ काउंसिलर बनाया। बट देन दे वर नॉट अभी जैसा मिनिस्टर एंजॉय करता है वो नहीं है, और ये प्रदेश काउंसिल वाला वो जो MLA पावर एंजॉय करता है वो नहीं है। वो पहले उंगली पकड़ कर चलाने सिखाया, फिर थोड़ा सा पाँव में चलने दिया। एंड 1975 में प्रोविजनल असेंबली करके जो लोग प्रदेश काउंसिलर था उसको बनाया। 1978 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ। So slowly they have held our hand, and 1987 में हमारा स्टेटहुड दे दिया। So this has been a progression, but then थोड़ा सा ये हो जाता है कि when we write the history documents, अभी timely ये हुआ, ये पहले जैसा बोला था, we thought कि this symposium will be a reference, इधर से बुक पब्लिश हो, सब लोग जो पार्टिसिपेंट करेंगे अपना अपना आर्टिकल दे, वो आर्टिकल को डिस्कस करें, एंड देन वी पब्लिश ए बुक जो फ्यूचर के रेफरेंस पॉइंट बन जाए, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए डिफरेंट डेट एंड ऑल। ये सोचा था मैं भी, अभी शुरू हो गया, बॉल को आपने रोल कर दिया। RG विल टेक दिस प्रोसेस अहेड फ्रॉम हियर, एंड एक डेफिनेट जो है आप लोग इस तरह का ये करेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। जस्ट वन सेकेंड ओनली, आई जस्ट टेक द सेकेंडली वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी हमारा आँख जैसा है। कौन सा चश्मा देख के लगा के देखता है वही कलर दिखा देता है। आपने लाल चश्मा पहना तो लाल दिखा देंगे, हरा चश्मा देखा तो हरा पहना देंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि हमारा बिस्मक नगर को लेकर या मालिनीतान को लेकर ये करके हम इंडिया से जुड़ा हुआ है सदियों से बोलने का पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि हमारा जैसे तवांग मोनास्ट्री हो गया,
और कहाँ में उसमें हैं, तिब्बत का साथ है, चाइना से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो घर है, आधा घर बर्मा में है, आधा घर इंडिया में है, उसमें जोड़ने के लिए हमें ये टेम्पटेशन से निकलना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आवर सेल्फ एज वी आर। अभी उधर में कोई सरकार आ गया, उधर से हम जोड़ने के लिए जबरदस्ती कोशिश नहीं करना चाहिए। वी हैव टू सी यस देयर वाज ए बिस्मार्क नगर, वी हैव टू सी इट एज ए बिस्मार्क नगर। देयर इज ए गोम्पा देयर इन तवांग, देयर इज ए गोम्पा देयर इन तुटिंग, वी हैव टू सी एज इट एक्सिस्ट देयर। वहाँ का बंदा वो करते थे, नथिंग टू चाइना का साथ जोड़ने के लिए या तिब्बत का साथ जोड़ने के लिए वो नहीं होना है, या बर्मा होना है। अगर जोड़ा हुआ है तो जोड़ा हुआ है, नहीं जोड़ा है तो नहीं जोड़ा है। बट वो टेम्पटेशन से ये हम लोग को ये बच के रहना है कि बिकॉज इट वॉज देयर, उधर से है। आर्टिफिशियली हम लोग को मीन्स एज एन एकेडमिशियन जो प्योर एकेडमिशियन का ये बात होता है, तो वो टेम्पटेशन से हमें दूर रहना है। इट्स डिफरेंट थिंग, कोई सोशल हो या रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, दे विल ट्राई टू गो बाय द इमोशंस, बट एज एन एकेडमिशियन ऑल ऑफ यू आर हियर, तो वो टेम्पटेशन से हम लोग सबको दूर करके रहना है। Thank you, Dan Saluji, for I think you made it very clear regarding the statehood wheel and its all pros and cons. Somewhere I think our learned audience may agree and disagree. But now, as a paucity of time, I'm told that we have to be very combined. Overall theme of today's is the charting the emergence of the state identity, and our sub-theme is this, the from early times to the statehood. Now, Mr. Ninung Iring, the Honorable MLA, would now go for the second round. I just want that, as we know, the index of civilization is artifacts. Now, artifacts is the index of the culture. Today, I think in the present contemporary situation, as we have attended state, somewhere we have, I think, very appreciably progressed in political culture, but our ethos and our identities, our institutional practices or cultures are somewhere eroding very fast from the very our living eyes. So how you as a legislators would like to look upon, and what could be the measures we can take up to make this a cultural identity as a very robust way? Thank you, sir. Your question pertaining to the culture of because we have such a large, vast culture. It is a garden of flowers, right from the Buddhists to the Doni Polo, then again the Christians. The whole culture is diversified, right from Tirap Changlang, you'll see the Wangchus, the Noktes, the Tangsas. Then you come down here to the Mishmis, the Khamtis. Then you come down again to the Adis, the Idus. Then you come here, you see our Nishi brothers, the Tagins. Then when you go back to the western side with Krimesar and of course from Tawang. Like we were just, Dani Salu was just mentioning that we have to be integrated and we have to stay firm with our own identities. Suppose we have brothers there, like in our honorable speaker's place, Bokars are there. They have that in China, they have them in Tibet, they have we have our Wangchus on the other side of Myanmar. But that is the diversity of the culture itself is the strength of Arunachal. That is what I think. Because we have so many tribes and sub-tribes. And we don't have a lingua franca of our own. Like say in Nagaland, they have the Nagamis, in Bengal, they have the Bengali, in Assam, they have the Assamese. But here we don't have any language as such. So we have to speak in English or we speak in Hindi. So, but
This is the actual unity in diversity, and keeping our culture strong is more important. Of course, I didn't want to bring this topic just now because, but we are in that like a transition period from Nepal to Arunachal Pradesh, and that is a discussion. But here you put a slightly complicated question to me, and it is now going very viral about this issue of the Christians and other religions, the indigenous faith. I would just like to bring a point here because I was a minister of minorities, union minister in Delhi. That time, the people asked me, because I was looking after the minorities, especially the Christians, Sikhs, the Buddhists, Jains. The other part, the Muslim part, was looked after by my cabinet minister. So when they asked me, suppose the people were from the hills, Gonds, from Odisha, from Rajasthan, and there were some conversions from the local, that means tribals, being converted into Christianity. So when they asked me, so what is your take on this? So I said, no, a tribal is born a tribal. They just put the schedule on us. If he's a tribal, he's a tribal. But putting a schedule on us to get some benefits, so they have that in the scheduled castes, they have that in the scheduled tribes, in the OBCs, and also on these 5 minorities. Now, here there's a discussion we have to ponder upon. Now, here, my own people, I'm also Doni Polo, we are saying that if a man is converted into Christianity, then he should not get the benefit of a scheduled tribe. See, you're born a tribal. Schedule is just to give us some provisions. And minorities are, it's a religion. Let it be Jains, let it be Sikhs, let it be Muslims, or let it be the Christians. But as a tribal, one should not mind and one should not take it otherwise. But the system that is going on now, that hatred should not be there. When you're saying about culture, here that thing comes. We have our culture. We have Nagas, 100% Christians. We have Meghalaya, 80% Christians. We have Mizoram, 100% Christians. But they are STs. So why is that difference being made in Arunachal? That is what I like to appeal to all of you also. Okay, let sleeping dogs lie. We should not, there's so many articles, so many cases, there's so many, in court also has been challenged. But during my tenure, my reply was that a tribal is born a tribal. But suppose he's a OBC or another caste, and he converts into Muslim, because the main issue was the Muslims and the Hindus, not the Christians. So that issue was that he is born a Hindu, and then he may be an OBC or he may be a scheduled caste, but suppose he takes Muslim, Islam, then there is no difference of high caste, low caste or OBCs. So then he surrenders his other caste or OBC and he becomes a minority, because it's in a religious way. But here we are tribals. So that differentiate between the other OBCs, scheduled castes and scheduled tribes, that difference was there. So that is the only thing I've spoken, that all the scheduled tribes throughout India, they do not lose the status of a scheduled tribe because they were born a scheduled tribe, and not exactly a scheduled tribe, but as a tribe. But the schedule is on them, giving us the protection, our rights. And so that issue I brought up because when you're speaking about culture, the diversized culture that we have here, it is, this itself is like, like a garden full of flowers, and we should accept this. We have to keep our own culture, we have to honor it, and especially to people who are, accepting other religions also, they should also, at least give them the due respect.
because the choice of religion is up to them. Because I will not quote the articles, the right to freedom, the right to religion, the right to, equality. All these things are there. You are the experts here, the technical people are here. I am not a technical man. But again, when we say that transition period from, I would just like to end this thing here, what we have to do forward, what are we to do in future? Because we have got a lot of assistance from the center. Our present government led by Pema Khanduji, he is doing pretty well. He is a young and dynamic leader. I may be from the opposition, I may be from the Congress, but when you say sabka saath, sabka vikas, sabka, vishwas, and we have to go along with that. We have to go with that tag. And what we should do, see, we must have what kind of comprehensive schemes we have to take up. I've divided, the issues of our state's critical development and what kind of issues we should take up now. Because that period of NEFA is over. We were giving a definition of a parent and a child, and who is to, the money and the power, all issues were being taken care of. But let me be very frank. We are now standing on our own feet and we have to look forward, we have to go forward. And if we just depend on the protection that we have, like the 1873 Bengal regulation, I still remember Shah Nawaz Hussain. That time I was an MLA and I had gone to Teju in rowing, and he had come. And you know what he said? You see the mentality, please, I'm not speaking the people from UP, Bihar or Bengal, but they said, and even now, to this day they say, अरे जब भारत में है, जब आप भारत के अंदर है, तब हमारे लिए क्यों हमको एक परमिट लेना है, हमको क्यों एक लाइसेंस लेना है, हमको क्यों एक passport जैसा चीज बनाना है? That feeling is come. We are only 2 MPs. Remember that. If 370 can go, then Bengal Frontier Regulation can easily go. So we have to stand on our feet now. It's about time. We cannot always say that, okay, we are protected by the inner line. People are starting to demand. Even in Meghalaya, they're demanding it. In Assam, they're demanding it. So one day they'll say, okay, enough is enough. You are part of India and you have to abide by the rules that is in the Constitution. Sir, so I'm telling you, we have to be very careful. Please wind up. Yeah, okay, I'm winding up. So, but what I'm saying is that we have 3 things which is very critical for us. That is to provide quality of life, harness the potentiality, and develop infrastructure. I will not go into details, but what I'm saying that the overall economy of the state, you know that the position not only here but throughout the world, there is a big problem. So we have to provide the quality of life and harness the potential. Harness the potential of what? We have now to go into tourism. We have to use our power resources. We have to use our mines and minerals. So until and unless we have some articles like that of Nagaland, like he was just mentioning, कि 371A का जब बात करता है ना, तो उसमें we have to pass it in the assembly. We have to take that issue up with in Delhi. Our MPs, our representatives must take this issue and give us the freedom of at least of what the properties that we have, so that we also do not go with the begging bowl, but we must stand on our legs. When we have got the power of a statehood, we must give in full powers to the rights over the rivers, over the land, over the minerals, and that is how we can go forward. So I'm thanking you for giving us so much time to me, but if and all there are some questions on, we can take that up. But all have to speak, so anyway, thanks a lot. Thank you, Mr. Iring, for making a very forceful closing remark. Rest panelists will have some interactions from the learned audience, because the audience should also be part of this discussion, so that we feel in a team. Otherwise, we will be in one-sided. So I would like to request the committee or some volunteers, that side, whomsoever would like to
ask at least 3 or 4 questions, not from the single person, but may kindly raise from there. Any one of you, please. We have, so that some better idea can come from the audience itself. Yeah. Yes, it's open for all of your house, please. And then yeah, please raise those one. Please feel free, anyone? Yeah, please upstairs. And those, you please get yourself introduced and your by professions or whatever you are doing. Yeah, name and place. Yeah. हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम केनमार गिबू है। मैं इस यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा स्टाफ हूँ, लेकिन आज ये प्रोग्राम के थ्रू मेरा दिल में बहुत दिन से एक सवाल था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है अभी जो चल रहा, लेकिन पॉलिटिकल इवेंट से ही है। मेरा सवाल वो आर के किरमे सर से है। 2009 और 14 को एक पॉलिटिकल डिबेट में आपने ऐसा कहा था, हमने भी शायद फेसबुक वगैरह में देखा था कि आप जो है हम लोग का अरुणाचल से ये ILP उठ जाना चाहिए। तो मतलब आप ओपन डिबेट में बोल रहा था कि पब्लिकली ये हटाना चाहिए। तो आपका मतलब हिसाब से अगर ILP उठता है तो हम लोग को और दूसरा क्या ऑप्शन है, आप बता दीजिए। मतलब यही मेरा सवाल है। थैंक यू। सवाल ये है, हमारा आर के किरमे सर ने 2009 और 14 ये दोनों में एक पॉलिटिकल डिबेट में इलेक्शन समय में ILP हटना चाहिए बोल के उन्होंने सपोर्ट किया है बोल के मतलब हम लोगों ने देखा है या सुना भी है। तो उसी चीज़ का संदर्भ में है ये क्वेश्चन। सर, आप ILP हटाने से तो क्या हम लोग को उसका बदले में देना चाहिए, आप बता के देखिए। मतलब ठीक है, गॉट इट। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? ऐसे है, हम लोग 21वां सेंचुरी में आ रहे हैं, आ गया है, और इनर लाइन परमिट्स या इनर लाइन सिस्टम जो है वो हमें एक चिड़ियाखाना जैसा बनाकर रखा हुआ होता है। इस तरह से करके आप आज जब दुनिया में पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है पूरा, तो हम लोगों का भी अगर खोलने के बाद जितने जो बाहर से अगर ये खोलते हैं तो बाहर उसका ओपन हमारा जो इन्वेस्टमेंट जितना है, आज भी देखिए 50 साल हो गया अरुणाचल बन के, कितना इन्वेस्टमेंट आया यहाँ, किसने आगे ये इंडस्ट्री लगाया है। जो इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाने से हमारा नौकरी नहीं होता है। आज भी हमारा हम लोगों का पॉपुलेशन के हिसाब में अगर ये हमारा ग्लोबलाइजेशन होने का फैसिलिटी अगर बाकी स्टेट के जगह तरह से अगर हमारे यहाँ पे होता है तो हमारे जितने यूथ है कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। ये एक ब्रॉडर थिंकिंग के बारे में बात है, ब्रॉडर थिंकिंग के बारे में बात है कि हमें इसके ऊपर में बहुत जोर से विचार करना है, क्योंकि अगर ये पुराने एक चीज़ को हम लेते चलते रहें, इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा करने की बात है। ये इसलिए मैंने कहा था। I think that's responded. Yes, please. Yeah, I think, please, some of you. Yes, here. I am Toboriwa. So last time also, because I had always in me, there was one big question. So last time when I met one brigadier here, he came here, then I asked. That was when China does something within their territory, why India become headache? Why India doesn't do equally this within our territory? This side, especially our two senior leaders. So what do you say in this regard? But China is doing in their own territory, and if China does something, India become headache. And why we don't do equally here this side, in our side? See, if you go to Mechuka Tuting, there is no road. Yeah, these are certain things. Again, we talk of we are Indian, part of India, and every time there is a newspaper, there is a boundary problem, Assam and Arunachal Pradesh. And within the same country, again, there is a fight between this brother and another brother. These all things, these are certain things very make us different. This is from my side. Any one of you can react.
That's a very pertaining question, which it is a very bone of contention, and especially to me when I was a member of parliament there also, and even our present honorable Law and Justice Minister, Mr. Kiran Rijiju, and also to Tapirgaon, they have always raised these issues when they were in the opposition. Now that issues are not being raised, but we have to raise this. When I was there also, we always raise it, especially about the staple visas and any visit of a dignitary to Arunachal Pradesh. There's a hue and cry. Last time when the president had come, then also hue and cry. Prime Minister comes, hue and cry. So now we also ask that question: are we really? Do you believe that we are in India? Sometimes we also feel bad. See, now we have infrastructure being developed along the borders. Why can't we do it? It's a right question, and I think everybody will agree. Why can't we have our roads till this date? Okay, we did not do, the Congress did not do in the last 60 years. But at least we have the government now. We have to pressurize them, irrespective of any political party. Aap hai, hum hai, Mangfi hai. We'll have to fight for it. And especially in the border areas, we feel bad. There's a drain, population drain coming out. You see in your areas, they're all coming out from there and settling in Itanagar, or they're settling in Doimuk, they're settling in Pasigat, or they're settling in Teju, or they're settling in, in areas where it is very easily accessible. Why can't we make them accessible? A right question. I think I've already raised this in one of my questions which will be coming up in this assembly. So I'm going to ask that question to the Honorable Chief Minister. And really, we have to make the government of India, irrespective of NDA, UPA, we have to tell them, if you accept us, you accept us. If you don't accept us, don't beat around the bush. The issue of Kimin, I still remember. Why do you have to have that issue and say it is in Assam? Why do you have to say that just because there is a diplomatic meeting going on with China, with the External Affairs Ministry, that we do not want to have a kind of an issue here? If it is Assam, then it is well and good. If the Raksha Mantri comes to Arunachal, again there's a hue and cry, so it will interfere with the diplomatic relations. Now we are speaking of a country. Why should we speak about diplomatic relations? 1962, that's a very long gone story. Now I think, sir, we have all to unite ourselves and fight that yes, Arunachal Pradesh, you cannot claim it. You make from Lhasa to Xinjiang, you make the roads, you make the railway super fast trains, you have the infrastructure, you develop it. We'll also develop it. We also develop our borders, and the main thing is infrastructure, that is roads. And once the roads comes up, all development will go back. Thank you. May I add a little bit? Yeah. See, I come from a border, all of us are from border states, but लेकिन कोई यहाँ नीचे रहते हैं, कोई border side में रहते हैं. अब पिछली कुछ सालों से, I think 3-4 साल से, हमारे border area में जो development हो रहा है, या infrastructure development में बहुत आगे बढ़ गया है. Be it in the western part of the India, be in Arunachal sector में, ये जो हमने आपके बहुत लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे बुमलागढ़ इलाके में, कुछ साल के पहले हमने देखा था कि वहाँ तक इनका चाइना का, वहाँ तो आप एकदम पूरा इस तरह जा सकते हैं, जैसे जस्ट एक लाइन लगा कर रखा हुआ है, एक पत्थर है, that side is China, this side is, you can go and stand on the Chinese land. I mean, we call it Tibet land. Tibet land में आप खड़ा हो सकता है. लेकिन पहले वहाँ नहीं था. अभी तो हमारा not only black top, double laning black top रास्ता वहाँ तक पहुँच गया है. Number 1, ये सही है. Number 2, I want to, जहाँ तक हम infrastructure development का सब कुछ है, at the moment किसी तरह से चाइना के साथ में हमारे इस सरकार ने झुकने का काम नहीं कर रहा है. आप लोगों सबको मतलब मिसाइल भी लाके यहाँ स्टेशन कर दिया लास्ट ईयर में, कितना हंगामा हुआ है चाइनीज और बोल के. जहाँ तक अरुणाचल का सवाल है, हम लोग अब स्टेट बन के, अरुणाचल बन के 50 साल हो गया है. मेरा सबसे एक ही अपील है कि क्यों नेता लोग आके, दिल्ली से नेता लोग आके यहाँ बोल के अरुणाचल इज इंडिस्पेंसेबल या वो अनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द अरुणाचल. हम क्यों नहीं आवाज यहाँ से उठाएं कि हम भारतीय है, हम अरुणाचली भारतीय है, तुम चाइना कौन हो सकता है कि हमें बात करने के लिए. ये आवाज उठना बहुत जरूरी है.
और मैं समझता हूं कि इस तरह से कॉन्क्लेव होने के बाद शुरुआत करें तो पूरे अरुणाचल में आवाज आए, तो ताकि ये मैसेज उस पार जाए और चाइना का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। Thank you. Yes. Supplementary. On this question, I also want to participate, and I think there is a policy decision at the government of India level, especially after the Chinese aggression of 1962. It came to my knowledge that government of India taken such a decision that from McMahon line down onward, around 300 kilometers, there should be a no road construction. There should be a no infrastructure development. They wanted to make that portion of upper region as much as inaccessibility. If they make a road infrastructure, in case of the Chinese again invaded India from that route, they will be using it. I think it was the wrong decision and wrong policy of the government India. But later on, I exactly forgotten the year when George Fernandez was the External Affairs Minister. It was NDA under this Atul Bihari Vajpayee. And there was a border intrusion, encroachment from the Chinese side in that, I think, in the Anjao district. And it was plus in the national media, national newspaper, it came in there. And thereafter, George Fernandez, he flew to that border area, made an error survey. And thereafter, government of India has decided that they have to develop this side of the border also. Because of this, I think so many road projects, so many projects are coming up. I think this is the historical fact. Thank you. We will have only one questions because I have said about the 4 questions, 2 has been already raised, 1 more left. Because it is fairness to all, so that is where 1 question is reduced due to the positive time. Okay, me, Dr. N.T. Rikam. It's not exactly question. I think when we are celebrating 50th year of Arunachal Pradesh, since the days of Union Territory, I would like to request our legislatures. Fortunately, we have 2 honorable legislatures today. Why don't we actually move a resolution in the State Assembly? Though earlier also you have regulations, but dedicating this 50th year of Arunachal, once again we can have a special regulation that state act, which is something defective, it has to be done away. Special power given to governor that is close to be actually do away, and other states like Nagaland, Mizoram and Meghalaya, that special provision should be given to Arunachal Pradesh. This regulation should be actually moved in the assembly, dedicating this 50th year of Arunachal Pradesh. This will be one of our positive actually step if we go ahead with. I think even student APSU, they are also raising time and again about this particular issue. So keeping in view the aspirations of people of Arunachal Pradesh, I think honorable members of Legislative Assembly, they can think over it and pass a special resolution, can even convene a special session dedicated to this 50th year, and that in that session such resolution can be moved and sent to the government of India. This is my opinion. Thank you, madam. That's, I think, House, all of you will agree, this is one of the burning or the teething problems which this state is facing, and that is where the question I have put to the one of the panelists
the one that the statehood bill. So I just want that to wind up, I have been time and again reminded that I'm exceeding the limits. So Mr. Danish Salu will make a closing remarks, what we have gained, what we have lost, and during this period from the earliest time to the statehood, and few remarks, you please make it. I'll just take 1 minute. What we have lost and what we have gained in last 50 years. Of the loss, I wouldn't be able to say much because I see so many positive things happening around, but still, actually, before you said, I wanted to ask our former minister, R.K. Khime sir को मैं एक question सोच रहा था आपने ये closing. Actually, I wanted to ask Khime sir about this one. Since you were in the thick of the politics in 1972-73, and you are still in the thick of the politics today, जब आप लोग 1970s में जो politics शुरू किया था, all the leaders were in 20s, वहाँ का idea, वहाँ का vision, वहाँ का expectation, वहाँ का action, और आज का leader का जो vision है, जो expectations है, आपको कहीं फर्क दिखाई दे रहा है कि नहीं? Actually, I thought instead of me, in case if he would have been in a better, he would have been in a better position to tell. So I'll pass on the question to Khime sir. But before that, just I'll make one remark. The thing is, I've been making this wherever I go around. बहुत ही छोटा सा है. One is, in places like university and colleges, emphasis and importance should be given to grooming politics and politicians. हम लोग गलत पढ़ाता है कि पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स मत बनो, पॉलिटिशियंस खराब है बोलकर बच्चा से कराता है. इससे खराब वाला और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ तो भी ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन से हुआ है, कोई हॉस्पिटल खुला तो भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन से हुआ है, ब्रिज बना तो भी पॉलिटिकल डिसीजन से हुआ है. तो लेकिन हम लोग चौथा से जैसा बच्चा को भूत का झूठ मूठ से डराता है, वैसा ही हम अंदाज में डरा देता है कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन ठीक नहीं बोल के. सो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल और घर में भी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन को तारीफ करना सीखे और राइट अप्रोच टू द पॉलिटिक्स सबको सिखाएं. वो एक तो मैं. सेकेंडली, सब जगह में दुनिया में देखो, इट इज अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन होके आगे बढ़ता है. जब फ्लाइट में जाता है तो क्या करता है, कोई तकलीफ का समय में ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाओ, फिर बाकी को हेल्प करो बोलते हैं. सो इट इज बिकॉज वी आर, देयरफॉर वी प्रोग्रेस. हम रहना है इसलिए हम रहेंगे. इसके लिए क्या है अरुणाचल सोसाइटी के लिए? वी हैव लैंड, वी हैव रिसोर्स, एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव मैन पावर. अगर ये देखा है, जापान प्रोटेक्शन पॉलिसी खेलते हैं, न्यूजीलैंड खेलता है, हर कंट्री खेलता है. हमको अपना आदमी का भी, रिसोर्स का भी प्रोटेक्ट करना है. बट प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकना चाहिए, क्योंकि हम प्रोग्रेस भी तो नहीं कर सकता है. उसके लिए ये करना है, हर बंदा जो बेटा है कम से कम 5 बच्चा पैदा करे. विदाउट आदमी का कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है, कई जगह का भी नहीं हो सकता है, सोसाइटी का भी नहीं हो सकता है. Any economic development, any political leader, minimum sustainable population is needed, which we lack by kilometers. So consciously, all of you, ये सबको address करना चाहिए. To one is political, हमको healthy politician बनाना चाहिए, और secondly, we should build a sustainable population amongst ourselves. Otherwise, हम ये करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या ये सब में चलते रहेंगे कि आउटसाइड और डरा रहेंगे. ये सब, ये दोनों मेरा ये अपील है. उसके बाद में मैं Khime sir से. Okay, thank you. So, Mr. R.K. Khime, one question has been passed on, that is regarding the what we have lost,
So, in a political culture or formation, just 2-3 words, you may give your closing remarks. वेल डिफरेंस तो बहुत है. हम लोग का उस जमाने में तो एक चीज़ तो हम लोगों के साथ पे एक तरह परंपरा था. हम लोगों के साथ पहले से ही एक ट्रेनिंग में आया हम लोग. ऑल दिस लीडर्स जो हम उस समय में आए थे, सब पंचायती राज से आया था सब. एवरीबॉडी हैड स्टार्टेड देयर करियर फ्रॉम पंचायत राज. और जब पंचायत में रहते थे, अब लोगों के बीच में रहना पड़ता था. तो वो जो है उसलिए एक आपके वो प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया गया था, एक मिशन के तौर पर लिया गया था कि हम हमारे स्टेट को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है. एक मिशन थिंकिंग था लोगों के पास में. अब धीरे धीरे आते आते अब क्या हो गया, अलग अलग पावर्स, अलग अलग फोर्सेस मूव करना शुरू कर दिया है. हमारे जो एपेक्स बॉडी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें अलग अलग फोर्सेस आना शुरू हो गया है. तो उस फोर्सेस में क्या होता है कि कोई अगर आज एक आदमी अगर उसमें करोड़ों रुपए खर्चा करके आते हैं, तो उसके 5 साल में तो वो उसको अपना रिकूप करेंगे या पब्लिक को मिशन में काम करेंगे. तो ये इस डिफरेंस तो दिखाई देता है. इसीलिए आप हम लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरी है कि आज इसको अगर अरुणाचल को आगे देखना चाहते हैं और एक साथ हम लोग यूनिटी देखना चाहते हैं, तो मेरा तो एक ही है कि इस हमारे जो अप्रोच है प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेके हमें मिशन तौर पे एक्सेप्ट करना है. ये सबसे बड़ी बात होगा. नंबर 2, मैं तो ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों को यहाँ में बहुत ट्राइब से 50 साल हो गया है. कैन वी थिंक ऑफ वन लैंग्वेज, किसी का भी हो, एडॉप्ट कर लें. आने वाले 100 साल हो जाएंगे तो कम से कम अरुणाचल में एक भाषा तो रहेगा कि हम लोग अपने आइडेंटिटी को बता सकेंगे कि भाई हम अरुणाचली है. अरुणाचल के साथ साथ में वो एक भाषा आ सकता है. ये आने वाले भविष्य का जो younger generation से आपके ऊपर छोड़ते हैं. ये बात है. Thank you. That was very nice. So since as we are running against the time, so there's a next panel teams are there. They are yet to start. So I'll just with the 2-3 sentences we wind up. First of all, I must extend my thanks to all the learned panelists, and they have done their best. I hope that has somewhere it has, I think, carries a lot of meanings and values in the contemporary situations today. The youngest states, but the largest, but so many things we are yet to cope up with that of the advanced states. And each of panelists has tried to articulate the question as it has been moderator put up there. And overall impressions and the outcome of our today's panel is that this Arunachal needs to be a dialogue of sustained development, taking an inclusive to across the board of each stakeholder. So my sustainable idea is that it should be environmentally accepted and correct and economically viable, socially fair and just, and culturally accepted, and with that parameters we can develop a pan-Arunachal concept of developing, not leaving anyone behind, and taking in a next leap to see that this Arunachal Pradesh can be a, I would say, the powerhouse of cultures, then indigenous knowledge systems, and people from across the regions, I think they can learn from us. And we are not that far. We are still keeping that living culture with us. This is proud for all of us. And with this, I thank you all for your rapt attention listening, a very learned audience and very encouraging. With this, I thank the organizing team and also the 50 years of christening the Arunachal Pradesh, the whole team of government of Arunachal Pradesh for giving us this rare opportunity of academic discourse. Because other party and all thing moment party is over, but this is a knowledge value based discussion. I think in one way or another way we got to learn from each other, and that will give a in-depth knowledge for us to next course of our
development programs and political cultures also progression. With this, I wish you all once again 50 years of statehood celebrations, and all the learned audience for their kind, supportive, and giving your valuable time to listen us. With this, thank you very much for organizing committees, and thank you. Thanks all. Thank you very much, the moderator of the first panel, Professor Tana Soren. With the team, Arunachal Pradesh from early days to statehood, we have dwelt upon the journey starting from the very foundation. We have peeped into the historical context of how Arunachal Pradesh, evolved itself into a full-fledged statehood. Very rightly given an academic touch on the issue by Sulu sir, that we should have more clarity on the historical content of Arunachal Pradesh as a state, and this is the right time to discuss and ponder upon all this and put it down in records. And we have also looked into the Chinese issue of, as rightly put out by Professor Tomoriba, and Ninong Iring sir has been always an outrightly speaking legislator from our state. Many a times he has represented himself in the national TVs and electronic medias. We have also seen how R.K. Krimer sir, one of the second batch of the state leadership, how Arunachal evolved from the very past into a full-fledged state today. So thank you so much, Iring sir, Krimer sir, Sulu sir, and Riddhi sir, for throwing us with the fact and knowledge for our teachers, students, and scholars here in the hall. Now moving on to the second panel on the theme political development issues and challenges. Yes, Arunachal evolved into a full-fledged statehood today. Few days from now, we'll be attaining the 50th year, yet we are also still dwelling with various issues. Claim has been made on certain achievement of the statehood of Arunachal Pradesh. However, down below the line, there are also certain queries which need attention and immediate redressal. To discuss upon all these issues, I invite the first panelist, the Honorable Member of Legislative Assembly of 9 Chiang Tajo Assembly Constituency, Sri Hayang Mangpisar, to please come on the stage. Hayang Mangpisar has been elected for the first time in this Legislative Assembly. Nevertheless, he has been quite vocal in the policies of the government, and he has been always upright in any of the issues relating to the governance in the state. We have seen him speaking in the Legislative Assembly. We have seen him addressing the press conference on behalf of the government of Arunachal Pradesh. We also expect that in days to come also he will voice for the people of Arunachal Pradesh. A very outspoken legislator from the state we got to see, and we are happy to have such legislator in the State of Assembly today. Thank you so much, sir. Next to him, I invite Professor Nabam Nakahina, the head of the Political Science Department, as the second panelist. Professor Nabam Nakahina. Will be dwelling into the political development issues and challenges with his expertise in the tribal patterns of customary laws. Registrar Rajiv Gandhi University doing the honor of felicitating the panel member. The 50 year of Arunachal statehood. Next, I invite on the stage as the third panelist, the Upfront Apex Students Organization of Arunachal Pradesh, the All Arunachal Pradesh Students Union's president, Sri Hawa Bagang, who is also a very outspoken leader, have always raised voice against the issues that were not in the interest of the state
of the students community as well as people of the state, Sri Hawa Bagang, the president of the, with so much of issues taken up by the All Arunachal Pradesh Students Union. He has always been quite outspoken in the issues, may it be the issue of the offspring, may it be issue of the refugees, may it be issue with state's boundary relation with that of Assam. Thank you, Hawa. Next, I invite on the stage the General Secretary of All Arunachal Pradesh, who will be speaking on behalf of the Northeast Students Organization, a conglomeration of various students organization of 7 northeastern states of Northeast, Sri Tobom Dai. Tobom Dai has also always been representing the APSU organization in the press and electronic media, and has always put straight the views and points of the students organization APSU. To moderate the panel, I now invite Professor Sarit K. Chaudhary, Department of Anthropology, a senior professor, and also the one of the most respected and revered professor of the university, to kindly come up on the stage and share the second panel. Thank you so much, Registrar Sir, the panelists on the stage, and the moderator. Now I hand over the time to the moderator, Professor Sarit Kumar Chaudhary. Thank you. All of you will agree that so far this panel discussion is concerned, the speakers of the first panel have already set the tone and the tune of this whole panel discussion. But I also like to say that looking at the time frame, I'll request all our distinguished panelists that keep it within the time frame, approximately maybe 10 minutes in the first round. Then what the tradition Professor Shoren, the earlier moderator, has initiated, we can take certain questions, maybe 4 or 5, and then I'll request that those questions can be answered along with some final remarks from the panelists. So then maybe I may take a few minutes to wind up the second panel discussion. I think all of you are already aware of the title of the second panel is Political Development, Issues and Challenges. Before I go to the speakers, in the way it was already laid down, I'll just like to say that I'm not a political scientist. I'm basically an anthropologist, became part and parcel of this institution, and in that sense, part of the state for almost last 27 years. By telling 27, I don't intend to have any kind of an authority over the state or the people or the issues involved. Only I will, before going to the panelists, I just like to say a comment which was said by one of our former
Vice Chancellor, late Professor Anudacharan Bhagavati, with whom I had association till he had his last breath. Professor Bhagavati perhaps remained one of the scholars who could have transcended disciplinary boundaries and talk about any issues which are concerning to the India's Northeast. And he is a person who started working among what we call today Arunachal since 1960s. So that's the kind of an experience or involvement or the engagement with the communities of this state. Now he used to tell me, having an exposure to work across the world, moving in different parts of the so-called the indigenous world, that perhaps the kind of transformation which Arunachal has experienced within this, what we are talking about 50 years time span, perhaps this has nowhere happened across the globe. So, putting these comments from Professor Bhagavati, let me invite Professor Nakahina, who is heading the Department of Political Science, to speak on some of the core issues linking with the panel so that we can go on talking one after on that issue. Thank you. Thank you, Professor Sarit Chaudhary, for giving me this opportunity. So, we are opening the Pandora box. This is for the first time in the history of Arunachal Pradesh. We are discussing such issues, political development, issues and challenges. There are many challenges and issues. So these challenges and issues are not, we are not blaming one particular government, one particular tenure or one particular political party, but these are, as my academic experience, I come across, these are some of the accumulated problems of the successive government and the societies. There are a lot of problems, so let us not come to the conclusion that this Nakahina is speaking against this particular government, this particular political party, and one of the panelists, Hayang Mangpi, is my own batchmate, and then APSU leaders are there. So these are some of the accumulated problems. I'm just trying to bring it to the public domain so that future generation, and this is just the beginning of such discussion, and it will long way to go. So then, first of all, I start with the Defective Statehood Act. How there was a problem in the Statehood Act, and then when I come across, when I go through the Statehood Act, there was the 16 scheduled castes included in Arunachal Pradesh, whereas there was no scheduled caste population in Arunachal Pradesh. So ultimately, we protested when I was a student of this university, and during that time there was a problem of the continuation of our Panchayat Raj institution. And in 1997, Panchayat Raj Act was passed, and it was sent to President Assent, then President of India. They refused to assent or approve the state, that is Panchayat Raj Bill Act 1900, Panchayat Raj Act 1997, with the query that your statehood, there are 16 scheduled castes included in your statehood bill or act. Where is the reservation for these 16 scheduled castes? So then finally there was a problem, and there was no Panchayat Raj institutions from 1997 to till 2003. So these are some of the problems. So imagine the statehood, some of our leaders were here, and then our young leader who was also ANSU president, and the activists are here. These are some of the problems. So then that is another problem. Then
that lead to a lot of problem. And not only that 16 scheduled castes enlisted in our statehood act, and there was no any special protections given to the people of Arunachal, indigenous people of Arunachal Pradesh. Rather, it was a special power given to the governor of the state to interpret the law according to the whims and will of, and just in the name of prerogative, right was given to our governor of the state. These were some of the issues, and today these issues are again, every time there is a human crying, the activists, some organizations are raising questions over and over, but there is no solution to it. Then refugee issues, Chagman Hajungs, and not only Chagman Hajungs, there are issues like ex-servicemen settled in Arunachal Pradesh. There are the Tibetan issues. There are lot of such issues which is a problem, creating problem for the people of Arunachal Pradesh. So the next is that the offspring issue. Of course, the APSU is taking this issue seriously these days, and I don't know when it will, we will able to see the concrete policy on this. So these are some of the issues. Then long pending boundary issues. So there, for me, short while ago, the previous panelists were discussing about Arunachal Pradesh as a part of integral part. Yes, I also agree. But then we are in between the two states. Arunachal Pradesh is between the two states. This side when we go, we are facing problem from China, and this side we are facing problem from the Assam, our own brother and sisters. So these are some of the issues, and they are without proper demarcation, without proper jurisdiction, how the state came into being. ऐसे तो लगता है कि बच्चा जन्म दे दिया है, अभी तक बच्चा का नाम ही नहीं दे पा रहा है हम लोग. And everybody is claiming ये हम उसका पिता है, हम उसका माता है, हम उसका, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है. Everybody is claiming, and still we are in the process of problem, and we are in the crisis. That is the issues according to me. Then anti-social element. The Arunachal was once known as, popularly known as what? Island of peace. But today there is a problem, and majority of problems come from the outside the state, our neighboring states. So, but then these days our people are also part to these social, anti-social elements, and they are also getting the training properly, and then they are also now part of the anti-social elements. So the government, government is not able to take the proper decisions or make any proper or concrete law on this. So this is a serious issue. Then erosion of tribal identity in the name of secularism. There is a lot of problem in the state today. Then indigenous people identities are in question today, and there will be time like one day there was people like that, there was culture like that, and it will be only in history paper, it will be only in the documents. So these are the serious issue government need to ponder upon. So then coming to the mushrooming of private education institutions. See, today there are thousands of the government schools without students. In the same time, the private school institutions, private institutions, school institutions, education institutions are grooming like anything. And then I have a doubt. When some organization says Arunachal people are poor, हम लोग क्या बोलता है, BPL डिमांड करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या क्या डिमांड करता है. हमको तो ऐसे लगता है कि जो अभी का जो सिनारियो को देखने से प्री में कोई पढ़ने वाला नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल आर क्लोजिंग डाउन बिकॉज देयर इज नो स्टूडेंट्स, एंड प्राइवेट स्कूल एवरी डे इंक्रीजिंग. उससे पता चलता है कि हम गरीब कहाँ हैं असली में.
and there is this is my own understanding, my own interpretations. अभी next panelist लोग जो members, honorable members, आप लोग क्या meaning निकालता है, that is up to you. Then there is a problems of protections of flora and fauna of the state, flora and fauna and our natural resource. For example, 2007, 2008, 9, the government of Arunachal Pradesh has taken 225 crores loan from the NHPCs and then thousands of the MOU signed with the private players and selling out the hydro potentials to the private parties. And then my question is why I am pointing out this. किसी समय का सरकार ने अपना हिसाब से MOU साइन कर लिया है without intimating the people, the real owner of the states. And for example, 225 crores at a rate of 9% interest, सरकार ने हम जो NHPC से उधार लिया है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं दे पा रहा है. And it is accumulating, interest rate is accumulating day by day. And Arunachal Pradesh is really going towards a trouble phase. And then privatizations of our natural resource. These are some of the issues. So then the government, inability of government implementing central schemes and flagship program. Today, government, I am not speaking against the one particular government, successive government, as repeatedly I am mentioning, this is a cumulative problem of the successive government. The government of Arunachal Pradesh, especially today's the present situation is, the government of India has initiated policies like 20 by 70, 80 by 20, 90 by 10. Many a time the government of Arunachal Pradesh is not able to release or give or generate the enough resource to give the matching share. And for that, because of that, many a time government of Arunachal Pradesh is surrendering the government schemes. They are not able to implement some of the flagship issues, the programs of the central governments. So these are the serious issues. So with this, I will not take much time, and with this, I think the other panelist member will give meaningful ideas, and then the audience also will participate and give meaningful ideas, and then come to the conclusion, and it will help, which will help to the policy makers. With this, thank you. Thank you, Professor Hina. I don't know, without seeing the watch also, you have just taken just exactly the 10 minutes of your time and finished it. Thank you for raising 7 major issues which are definitely concerned with the transition of the state, or whatever we call the political development of the state. Now let me move to the second speaker, panelist, Mr. Hawa Bagan, who is the General President of this, the prime students' bodies of the state, which has a long history, in terms of the making of the state itself. सबको नमस्ते. Respected today's moderator, Professor S.K. Chaudhary ji, Honorable MLA Naing Changjo, Ayang Mangfi ji, my GS representing to NESO, and my Ache, the Professor Navam Nakahina ji, all the professors, teachers, students, and staff of RGU. Thank you for opportunity for important issue of 50 years celebration of Arunachal Pradesh. और खास करके बहुत बहुत आभारी हूँ डेविड गाओ जी मुझे बुलाने के लिए. एक्चुअली मेरा तो स्पीच होते रहता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम में आपका सामने में प्रोफेसर लोग का सामने में मैं मैंने थोड़ा सा समय दीजिए. मैं तो
मेरा कहना है कि अरुणाचल को आपसू कैसे चलाया वो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बिफोर गवर्नमेंट आपसू था। स्टूडेंट मोमेंट्स में 1947 से जो है हम लोग स्टूडेंट मोमेंट शुरू हुआ है, तो 1947 का या कोई भी नहीं रहेगा। उसी वक्त फर्स्ट स्टूडेंट मोमेंट का प्रेसिडेंट जो है हमारा नेनोंग एरिंग सर का पिताजी था, दाइंग एरिंग, टिल डेट मेरा तक। तो हम लोग 1967 में हम लोग का आपसू कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद लास्ट ईयर 2017 में हम लोग का भी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हम लोग ने ये जो IG पार्क में हम लोग ने मनाया। सो सब वीकनेस है। तो इस तरीका से जब गवर्नमेंट नहीं था आपसू काम किया जाता था, जब न्यूज़ वाला नहीं था, जब जर्नलिस्ट नहीं था, उसी वक्त आपसू जो शिलोंग में जाके असम का जो गवर्नर था, इसका नाम भूल गया, विष्णु साहेब के शिलोंग का, वो असम का गवर्नर का एडवाइजर था। तब जाके बहुत सा आपसू लीडर ने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को अरुणाचल में जो है डिमांड किया गया था। तो आज इसलिए अरुणाचल में इंग्लिश और हिंदी चलता है, नहीं तो उसका पहले आसामीज चल रहा था। तो आपसू ने देखा कि वर्ल्ड वाइड में आसामी नहीं चलता है, देश में इंडिया में आसामीज पूरा देश में नहीं चलता है। तो आपसू का एक बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट था। 97 में फिर रिजर्वेशन का शुरू हुआ है, 80-20 रेशियो, ये सब काफ़ी काम किया है। और रिफ्यूजी प्रॉब्लम तो आप सब जानता है, अभी CM ने अनाउंस कर दिया, हमारा MP लोग ने अनाउंस कर दिया। तो ये है, तो आपसू तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया है। और गवर्नमेंट जब आपसू का मेन मोटो जो है, बहुत लोग या में आपसू क्यों अपोजिशन का रोल करता है, आपसू क्यों स्टूडेंट का सिर्फ काम नहीं करके पॉलिटिक्स में घूमता है, इसमें घूमता है। आपसू ही ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, अरुणाचल का माँ भी है, बाप भी है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लग सकता है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी लग सकता है। अरुणाचल के लिए अगर कोई भी रॉन्ग पॉलिसी ट्राई करेगा, तो इस तरीका से आपसू ने आज तक अरुणाचल के लिए काम किया है, शायद किसी ने भी नहीं किया है। किसी भी ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का जैसे नहीं है, जो फ्रीडम फाइटर लोग को छोड़ के। और हम लोग अरुणाचल ऐसे एक स्टेट है, आपको पता है, हम लोग तो किसी के अंदर में नहीं था पहले से। हम लोग पहले से फ्रीडम है, हम लोग खुद इंडियन बनेगा कि हम लोग मान रहे हैं। ये सिचुएशन है, तब भी हम लोगों को ILP दिया गया है, अरुणाचल का इंडिजिनस को प्रोटेक्ट करा बोल के। तब भी क्या आजकल क्रिश्चियन में, हिंदू में, मुस्लिम में कन्वर्ट करने का बाद क्या करता है कि हम लोग का ओरिजिन ठीक नहीं है। यही ठीक है, जेरूसलम वाला ही ठीक है, UP बिहार वाला ही ठीक है, वहाँ का मक्का मस्जिद वाला ही ठीक है। ये हम लोग ओरिजिनल को अभी ख़त्म करा। इसलिए हम तो सोचता है यहाँ में जितना भी प्रोफेसर है, कभी कभी आपका लेक्चर में भी स्टूडेंट लोगों को ये सवाल पूछना है, अपना ओरिजिन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये था मेरा एक अरुणाचल का ओरिजिन को आपसू ने बचा के रखा है, लेकिन आज रिलीजन का नाम पर ख़त्म कर रहा है। इसके बाद बाउंड्री प्रॉब्लम को तो आप सब पता है, असम का जो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि वहाँ का कमिटी ने दे दिया 70-30% अरुणाचल को रिटर्न करना है असम का जो ज़मीन से। तभी वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी एमिकेबल सोल्यूशन पक्का होगा, जहाँ जहाँ में मैप जाएगा वहाँ से पक्का हो जाएगा। उसके बाद रहा है कि आपसू का एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी में छूट गया था, पंचायत इशू और ये ऑफ स्प्रिंग इशू। पंचायत इशू को आप सबको लास्ट टाइम पता है कि विजयनगर में हम लोगों ने रुका के रखा है, क्योंकि वह सिंपल सा है। अरुणाचल गवर्नमेंट क्योंकि बाहर का लोग पहले टाइपिंग मारने वाला बाहर का था, टेक्निकली मैंने जस्ट घुमा के रख दिया, 2 वर्ड वहाँ में डालने से ख़त्म है, कोई इशू ही नहीं है वहाँ। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग इसको जो डायरेक्ट पॉइंटेड करके नेक्स्ट प्लेन में जो है वो 100% अरुणाचल फेवर में 1-2 वर्ड ही लिखना है सर, इतना को मेजर नहीं है ये है। तो ऑफ स्प्रिंग इशू को बहुत पहले हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जब आपसू बोलता था कि चाइल्ड जो अब्यूज़ करता है, चाइल्ड मैरिज करता था, फोर्स मैरिज करता था, फोर्सफुली जो मैरिज करता था, अपना ही चौथा बेटी को इतना 60-70 ईयर का बूढ़ा का साथ फोर्सफुली मैरिज करता था, आपसू ने प्रोटेस्ट किया। आज बहुत कम लो है, ना का बराबर ही हो गया। स्टूडेंट मूवमेंट ने
हम लोग भी बहुत चौथा के चिल्लाया। उसी वक्त में ये पॉलिसी को आपसे बात करना चाहिए था ऑफ स्प्रिंग को। आज देखिए बांग्लादेशी मुस्लिम जो है अरुणाचली लड़की को जो ऑलमोस्ट 300 जैसे शादी किया गया, 300 में से ऑलमोस्ट 200 या 250 जो है अरुणाचल अंदर में है। उसका बच्चा जो है आज वहाँ में बांग्लादेशी मुस्लिम का बायोलॉजिकल फादर का वहाँ जाता नहीं है। वी आर द पैटर्नल सोसाइटी, हम लोग जो पैटर्न पिताजी का टाइटल लेके बैठता है, लेकिन आज उसका बच्चा सह रहा अपना ही माँ का टाइटल लेके, तो डायलूट हो रहा है ना। ये तो हम लोग का एक खून खराब कर रहा है ना, खून को हम लोग का एक सोसाइटी खराब हो रहा है ना। अनादर बाद में त्रिपुरा हो जाएगा। आप शिलोंग में देखो पुराना जो ब्रिटिश लोग का बच्चा लोग अभी अपना राइट मांग रहा है। क्या ये आदमी लोग या 50 ईयर 100 ईयर बीतेगा तो ये लोग डिमांड नहीं करेगा क्या? एक ग्रुप बना के डिमांड नहीं करेगा क्या? आज तो मेरा अपना बेटी है, अपना बेटा है, इमीडिएट दीदी का बच्चा है, मेरा बेटी का बच्चा है, मेरा दीदी का या बहन का बच्चा है। अनदर 100 ईयर में बेटी बहन का बात आएगा, मेरा राइट कहाँ है? मेरा राइट कहाँ है? रिसेंटली ऐसे हुआ है यहाँ में एक आदमी को हैपन हुआ है, एक एडॉप्शन हुआ है किसी का बच्चा, नॉन ट्राइबल किसी का बच्चा को एडॉप्शन हुआ है। बाद में क्या हो गया कि लड़का ड्रग्स मारना शुरू हो गया, बदमाश करना शुरू हो गया, चोरी करना शुरू हो गया, डकैती करना शुरू हो गया। रिसेंटली का बात है। तो माँ पिताजी बोला तुम मेरा बच्चा नहीं, तुम तो बाहर से हम लोग पाला वाला है। बच्चा अभी माँ बाप को केस दिया, तुम मेरा माँ बाप कहाँ है? तुम चोरी किए हमको, अभी मेरा माँ बाप को बताओ, मेरा माँ बाप कहाँ है? कोर्ट में उल्टा तुक दिया। इस ऐसे केस जो है बहुत आएगा। इसलिए हम लोगों ने ऑफ स्प्रिंग इशू को अभी फाइनल लॉ वेटिंग में है, फाइनल लॉ वेटिंग में है। नेक्स्ट ये महीना अंदर तक या नेक्स्ट महीना तक पक्का असेंबली में आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग तो जस्ट किसी का अगेंस्ट नहीं है। हम लोग अरुणाचल को कैसे प्रोटेक्ट करना है जस्ट हम लोग ने जो आला किया था, गवर्नमेंट मान गया। तो एडॉप्शन पॉलिसी भी सेम चीज़ है। आज तो उसका बच्चा है, जब वो मेरा पंचायत राइट मांगना शुरू होगा, मेरा बराबर करना शुरू है, कोई ना कोई उस एडॉप्शन बाप तो नहीं रहेगा ना, उसका माँ तो रहते नहीं रहेगा ना, उसका ही असली भाई दादा लो, उसका ही फैमिली, तुम तो बाहर से लाया वाला है, बोलना शुरू हो गया, यही केस वाला आ जाएगा। तब तो मेरा बाप का माँ बाप कहाँ है? मुझे कहाँ से लेके आया? मैं कहाँ है? तुम लोग हमको चोरी किया। तो ये तरीका से प्रॉब्लम आते रहेगा। इसलिए ये सब को हम लोग ने इम्पोर्टिंग रखा है। और जो ट्राइबल प्रैक्टिस को हम बार बार बोल रहे हैं, रिलीजन कन्वर्जन लोग खराब कर रहा है, हम लोग ओरिजिन को ख़त्म कर रहा है। लाइक हम लोग का जो भाषा है, अभी स्कॉलर लोग को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ में जितना भी स्कॉलर है, जो स्टूडेंट है आरजीयू में, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। बहुत सा स्कॉलर जो है कोरियन का, जापान का और बाहर स्टेट का आरजीयू में 2 साल 3 साल बैठ के जो है स्टडी करता है। आप लोगों का स्टडी जो सिर्फ हफ्ता का स्टडी है, महीना का स्टडी है, और किसी को फोन करके स्टडी का थोड़ी होता है। आप हर एक क्रेचर, 1000 क्रेचर, मेरा अभी निसी का भाषा में मैं जानता हूँ। आज मैं बस्ती से पैदा हुआ है, बस्ती से पढ़ के आया, 1000 क्रेचर का नाम मैं जानता हूँ आज। लेकिन मेरा बच्चा उसको जो है जानने के लिए तो प्रैक्टिस या बस्ती में होना पड़ेगा, नहीं तो लिख के रखना पड़ेगा। कम से कम ऐसे चीज़ को स्टडी कीजिए। 1000 आपका निसिंग नामक जो पेड़ पौधा है, इसका नाम अभी आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। कम से कम किसका काम है? वो तो स्कॉलर लोग का काम है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ स्कॉलर लोगों को, आप कहीं भी बैठो, बस्ती में बैठो, कहीं भी बैठो, आप जो दिल से अरुणाचल के लिए रिकॉर्ड करके रखिए, नहीं तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और बहुत सा स्कॉलर को अपना खुद किताब लिखने वाला को ना पूछेगा, बिल्कुल मालूम नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, या अभी जो बच्चा लोग स्टडी कर रहा है, खुद लिखने वाला को पूछेगा, मालूम ही नहीं होगा। ऐसे डुप्लीकेसी काम नहीं करना है। और अरुणाचल में आप देखो पॉलिटिकली ये जो है जो मार रहा है बच्चा लोग को, पुलिस डिपार्टमेंट, इतना बच्चा लोग अभी ड्रग्स ये जो है कंज्यूम में इन्वॉल्व हो गया। इतना बच्चा लोग अभी खास करके लड़की बच्चा ज़्यादा है इसमें ड्रग्स मारने में। तो इस तरीका से ड्रग्स जो पेडलर है, ड्रग्स जो सप्लायर है, उसको पकड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट। क्या करता है? दिखाता है सिर्फ, लेकिन उसको जो फॉलो नहीं करता है, स्टॉप नहीं करता है।
एक आदमी को कितना छोड़ेगा, एक आदमी को कितना पकड़ेगा। और पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा से जानता है ड्रग्स पेडलर सप्लायर लोग कौन कौन लोग, अच्छा से जानता है, लेकिन अच्छा से रोल नहीं कर रहा है। इसको रोल करने नहीं देने वाला ये मंत्री लोग है, एमएलए लोग है, ऑफिसर जो कमिश्नर सेक्रेटरी लोग, किसी ना किसी का रिश्तेदार निकल जाता है, किसी ना किसी का हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ड्रग्स जो सप्लायर है, मैं तो चाहता हूँ कि 1 साल 1.5 साल 2 साल उसको जेल में बंद करना है। कम से कम 1-2 साल तो ड्रग्स माने सप्लायर जो बंद होगा ना, बहुत सा बच्चा लोग उसका लाइफ का आगे बढ़ जाएगा इसमें। इसके बाद अरुणाचल में हम लोग वहाँ कोई टैक्स नहीं है, कोई ये जो है किसी से कलेक्शन करनी है। हाइड्रो पावर, ये अच्छे ने बोला है, हाइड्रो पावर देखो या रंगा नदी से हम लोग को कितना मिलता है, कम से कम यहाँ से 40 करोड़ पर ईयर मिलता है। अब एक छोटा सा है, वहाँ से 20 करोड़ मिलता है। अब एक किमी का वहाँ से 120 करोड़ समथिंग मिलता है। स्टेट को 4% फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ऐसे डेवलपमेंट को अरुणाचल में करने नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का तो सिर्फ हम लोग का सिर्फ पैसा पानी में, नदी में हम लोग का, इसको करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे दबा के रख दिया कि मेरा जमीन होके भी हम कुछ नहीं कर सकता है, मेरा नदी होके भी हम कुछ नहीं कर सकता है, मेरा पहाड़ होके भी हम कुछ नहीं कर सकता है। इस तरीका से इसको जो है आरजू वाला लो आप लोग मोमिन करना है। हम लोग तो हमेशा बात किया है, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को दिया है, गवर्नर को इतना पावर दे के रख दिया। हाँ, बॉर्डर स्टेट है, 100% पावर नहीं देने से भी कम से कम 60 एमएलए का फाइनल होना चाहिए। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे यूपीए वित्त हो या एनडीए वित्त हो, कोई इम्पोर्टिंग नहीं लेता है, तो हम लोग का राइट को जो है खत्म कर रहा है। मगन जी, यू विल गेट सेकेंड चांस ऑल्सो। हाँ, तो आप आरजू का बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट आरजू में स्कॉलर को तो मैंने रिक्वेस्ट किया है आप लोग में, क्योंकि समय नहीं है। और आरजू का जो स्टूडेंट है, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ में आरजू का जो आरजू शुरू हुआ है, ये है आरजू में प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट से लेकर थोड़ा ख्याल नहीं करता है। हम सॉरी बोल रहा है। रैली आपका ये बिल्डिंग बनाने वाला को भी देखिए कौन करता है। आरजू का हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से नहीं बन रहा है, क्वालिटी से नहीं बन रहा है। इसलिए वीसी साहब को खास के मेरा रिक्वेस्ट है, आप कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। आप ये ऑडिटोरियम को भी आप देखिए क्या क्वालिटी बना के रख दिया। ऐसे नहीं होता है। आरजू को इतना अच्छा से एक दिखने से यस ये आरजू है, यस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ में तो गाय जो ओपनली घूम रहा है, मिथुन ओपनली घूम रहा है, यहाँ में जो इतना कचरा पड़ा हुआ है, कम से कम एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेके टीम वर्क जो है लाइक यहाँ में फ्रेश माने टाइप का करना है। इन्वायरमेंट जो है इतना हाई टेक होना है। इस तरीका से आप लोग मोमिन करना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोला है, तमाम समय में भी बोला है, सिर्फ आरजू जो है स्टूडेंट मोमिन में स्टूडेंट इलेक्शन में एक्टिव होने से थोड़ी होता है। आप अरुणाचल का स्टेट का सबसे हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। आपका सिर्फ काम जो है पढ़ाई अकेला नहीं है, हर एक चीज़ को बात करना वो भी पढ़ाई है, वो भी स्टडी है। आप पढ़ाई पढ़ते सिर्फ पढ़ाई जान गया, बाकी चीज़ को भूलो, वो भी नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट जो है हर एक्टिविटी तो करना बहुत जरूरी है। और ये जो है अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री को पॉलिटिक्स को तो आप सब जानता है। मैं तो एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब अपना गवर्नमेंट बनाएगा अच्छा है, जब वो जो मौका नहीं मिले गवर्नमेंट से आ जाएगा खराब है। यही अरुणाचल का बहुत पहले से आया है। और सेंट्रल में बीजेपी आने से कांग्रेस का पूरा फोटो को छुपा के बीजेपी का लगा देगा। बाद में बीजेपी आएगा, कांग्रेस आएगा, फिर जो बीजेपी का फोटो छुपा के डायरेक्ट कांग्रेस का लटका के रख देगा। दैट मीन्स आपका जो है सिर्फ ओल्ड पॉट है, पुराना बोतल है, अंदर में सिर्फ कुछ भी डाल सकता है, किसी का पत्ती का माने जूस हो सकता है। इस तरीका से अरुणाचल पॉलिटिक्स है। यहाँ में आइडियोलॉजिकल बहुत कम था पहले से। यहाँ में पहले से बहुत सा चीज़ को प्रिजर्व नहीं किया गया। वो समय में मौका था, लेकिन आज का जो गवर्नमेंट चलाने वाला मैं तो दिखता बहुत कोशिश करता है। अरुणाचल में सिर्फ अला करता है
पॉलिटिकली इंस्टिगेट, उसका बाद उसको काम नहीं मिलता है, या उसका भाई हार जाता है, या बाया हार जाता है, मामा हार जाता है इलेक्शन में, तब जाके वो आदमी करप्ट बन जाता है। तो ऐसे नहीं देखना है। कोई भी अथॉरिटी पॉलिसी को अच्छा से देख लो। यस, ये एक दो चीज़ जो है पॉलिसी ठीक नहीं था, हम लोगों ने बंद कर दिया। लाइक TV10 को जो है C क्लास नकली देगा बोलना शुरू हो गया, हम लोगों ने तो वार्निंग दिया, इसको बंद कर दिया। ट्रेडिंग लाइसेंस देगा बोला है, हम लोगों ने बंद कर दिया। तो इस तरीका से जो कुछ अरुणाचल का माना करप्ट के लिए पॉलिसी होता है, तो हम लोग हमेशा हैं आपसू पॉलिसी के लिए बहुत ये होता है, स्ट्रॉन्ग से हमेशा रहता है। तो लास्टली अच्छे मैं तो चाहता हूँ ये आप लोग का जो 50 ईयर सेलिब्रेशन में जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए अलाउंस करना चाहिए। लाइक पासीघाट जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी को जो फुल फ्लेज कर देना चाहिए, मेरा ख्याल से वो एश्योर भी किया है। लाइक ऑल इंस्टीट्यूशन को जो है 50 ईयर सेलिब्रेशन में जो है स्कूल इंस्टीट्यूशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आगे बढ़ाना चाहिए। तो इतना मैं बोल के थैंक यू। Thank you, Bhagavaji, for briefly talking about the historical role APSU played in this making of these states and some of the burning issues of our time. Now, before I call the senior most panelist, I'll call Tabum Daiji, who is the General Secretary of APSU and also representing NESO, the highest students' body of India's Northeast. आदरणीय प्रोफेसर शरद कुमार चौधरी जी, जो आज का ये जो पैनल सेशन है इसका कोऑर्डिनेटर, माननीय विधायक नयन शांग थाजोका और हायांग बांगपी जी, और जो खुद भी हमारे छात्र संगठन से ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन से उभर के आया है, प्रोफेसर नवम नका हीना जी, और यहाँ जितने भी मानव बैठे हैं, मेरे आदरणीय गुरुजन, माय बिलोवेड यंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर्स है। एक्चुअली मैं यहाँ हमारे जो APSU का जो अध्यक्ष है उसको एकम्पनी करके आया हुआ था, लेकिन प्रोबेबली यहाँ एक पैनलिस्ट कुछ बीमार के कारण नहीं आ पाया, तो उन्होंने सोचा कि जब आया है तो हमें भी मौका एक देना है बोल के, और हमें आज एक ऐसा नया उपाधि APSU से नेसो पहुंचा दिया। हालांकि मैं APSU में जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव का तौर पे काम करता हूँ, लेकिन मैं नेसो से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, हमेशा नेसो का इश्यूज़ में रहता हूँ। तो इस प्रोग्राम में सम्मिलित कराने के लिए, सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो यहाँ हम लोगों को जो डिस्कशंस का जो इश्यूज़ जो एक हम लोगों को टॉपिक दिया है, इट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी नेसो का मेंबर्स का तरफ से मैं बोलूँगा, और लेकिन व्हेन यू स्पीक अबाउट नेसो, नेसो इज़ द कोलैबोरेशंस ऑफ ऑल द एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, लाइक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, नागा का, मिजो जरलाई पोल, मणिपुर का, गारो, खासी सब, और APSU सब हम लोग मिलके नेसो का हम लोग एक प्लेटफॉर्म में, जब भी देर आर बिगर इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लाइक वी हैव सीन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक का जब आया था, हम लोग ने जोर तौर से हम लोग ने काम किया। हालांकि हर अपना अपना स्टेट में जो वहाँ का एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस उसको पदभार को संभालता है, लीड करता है अपना स्टूडेंट्स मूवमेंट को, लेकिन एक थिंक टैंक ऊपर में नॉर्थ ईस्ट का नेसो का तरफ से उसको एक ये सूचना देता है कि ये करना है। तो नेसो हैज़ एन वेरी पाइवेटल रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो यह है इश्यूज़ को लेकर। एंड व्हेन वी कम एक्सक्लूसिवली तो अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने हवा बागांग जी ने यहाँ जो इतिहास है APSU का और अरुणाचल का जो रिलेटेड है उसको बताया है संक्षिप्त में, और मैं जो कुछ भी मैं भी अगर बोलूँगा तो उसी को ही सप्लीमेंट करके उसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री वे में ही मैं भी कहूँगा।
तो जो जब यहाँ जैसे बोला हूँ, जब यहाँ पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, जब यहाँ पंचायत सिस्टम नहीं था अरुणाचल प्रदेश में, और ये तो आज हम लोग 50वीं जयंती मना रहे हैं रिक्रिस्टनिंग ऑफ द स्टेट फ्रॉम नेपाल टू अरुणाचल प्रदेश जो 1972 में हुआ है। तो उससे पहले यहाँ जो भी मूवमेंट था पब्लिक के लिए या हमारा इनोसेंट ट्राइबल विलेजर्स के लिए जो भी इश्यूज था, तो कुछ गिने चुने जो स्टूडेंट्स जिन लोगों को लगा कि जो थोड़ा पढ़ के बाहर मिशनरीज में या आसाम में कहीं पढ़ के एक कॉन्शियसनेस आया कि हमारा जगह में भी सड़कें बनना है, हमारे जगह में भी हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना है, ऐसा एक सोच विचार से धीरे धीरे एक ये संगठन आया स्टूडेंट मूवमेंट। और पहले तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम था ये अरुणाचल प्रदेश नेपाल में उस समय में, तो हमारा जो सियांग बेल्ट का ही कुछ स्टूडेंट्स, आदि मिसिंग स्टूडेंट्स, उसके बाद अबोर मिरी स्टूडेंट्स यूनियन, उसके बाद ऑल नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन, उसके बाद हम लोग ने भी जब अरुणाचल प्रदेश का नामकरण बदला तो हम लोगों ने भी ऑल नेपाल स्टूडेंट्स से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का हम लोग भी नाम लिया। तो इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा कि जब अरुणाचल प्रदेश का जब बात करेगा तो वी कैन नॉट डिनाई द कंट्रीब्यूशन द सैक्रिफाइसेस ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट। और मैं बहुत आभारी हूँ हम लोगों को भी, आपसू को और हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और हम लोग को अपने बात रखने का मौका दिया। और ये एक बहुत ये है एक वेरी मोमेंटस ओकेजन है। हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है 1972 उस, अगर हम लोग नामकरण से रिक्रिस्टनिंग ऑफ द नेम्स अगर हम लोग बोलेगा तो हम लोग ने 50 साल वो किया है। एंड वी हैव सीन देयर हैव बीन चैलेंजेस, देयर हैव बीन अचीवमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस है, अचीवमेंट्स भी रहा बहुत सा। हम लोग ने देखा है सरकार, एजेंसी, काउंसिल देश से, और आज तक हम लोगों ने देखा है। और जब यहाँ जब पॉलिटिकल इश्यूज का जब हम लोग बात करेगा तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि पॉलिटिकल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये बहुत ज़रूरी है अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे मेरा अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ तो सेंटर में जैसे पावर चेंज हो जाता है, पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है, यहाँ भी ऐसे भागदौड़ शुरू हो जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है ये बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज अरुणाचल इज़ एक मल्टी एथनिक स्टेट है, इसका भी अपना चैलेंजेस है यहाँ इसको गवर्न करने के लिए। तो एक बहुत जो मैं जो देखता हूँ एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो ये हमारा यहाँ जो एथनो जो सेंट्रिज्म जो ये है, ये एक बहुत बड़ा एक ये है चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो लेकिन उससे हम लोग उभर के आना है। और जो हमारा जो स्टेट है, कुछ जो अगर हम स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से कहेंगे तो जैसे स्टेटहुड का जो डिफेक्टिव का जो बिल है उसको हम लोग हमेशा चिल्लाते रहता है। ये इस बार सिर्फ नहीं है, बार बार जब से स्टेटहुड देने का जब बात किया तब भी आपसू ने कहा था उस समय हमारे नवम रेबिया साहब अभी जो खुद MP है उनका अध्यक्ष का उसमें उसका नेतृत्व में उसमें भी आपसू ने उसको अपोज किया। मैं भी आपसू नेतृत्व ने उसमें भी देखा था कि अरुणाचल इज नॉट रेडी। अगर देना भी है तो बहुत सा चीज़ें को चिंतन मंथन करके बहस करके लोगों का एक कलेक्टिव ओपिनियन लेके स्टेटहुड लेना चाहिए। लेकिन उस समय का हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका जो अपना ओपिनियन था वो अलग था। और हम लोग को आज जो मिला है ये डिफेक्ट हो गया। आज हम ज़मीन का मालिक नहीं है, आज हम अपना नदी पहाड़ जितना भी रिसोर्सेज है उसका हम मालिक नहीं है। तो ये भी अपने आप में वो है। तो जो लास्ट टाइम जब ऑटोनोमस काउंसिल का इश्यूज आया था, जब मोन एंड पटका ऑटोनोमस का, और इस स्टेट में जोर जोर से उसका अपोजिशन हुआ, तो उसमें फिर से आपसू ने दोहराया कि ये जो ऑटोनॉमी है ये सब जो बंटने का जो काम कर रहा है इसको छोड़ के जो 371H है जो डिफेक्टिव बिल है इसको करेक्शन करना है बोल के उसमें एक रेजुलेशन लिया था। आज हमारे लकीली फॉर्चुनेट एनफ हमारे राज्य सरकार का तरफ से बड़े भाई अवहांग बांगपी जी है, मैं उससे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा जो वहाँ रेजुलेशन आया था उसके ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जो स्टेटहुड डिफेक्टिव का। और इस बार सिर्फ नहीं है, पहले भी इसके ऊपर में असेंबली में चर्चा हुआ है, चर्चा करके वहाँ भेजा है। लेकिन उसका पीछे क्या होमवर्क है, जब आपसू या कोई यूनियन या कोई ऑर्गेनाइजेशन चिल्लाएगा तब सिर्फ जो गवर्नमेंट जागने से वो नहीं होता है।
government should always have its own एक rigorous और एक वो करना है, because this is about our ये survival, हम लोगों का, अरुणाचल प्रदेश का, हम लोग का अस्तित्व का बात है. तो उसके बाद क्योंकि नेशो होने से भी मैं हमेशा हम लोग यहाँ APSU has been spearheading the refugee movement, the Chakma Hajong movement and the boundary issues. ये नेपाल देश से होते आ रहा है और अभी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है. आप सब अभी हाल ही में देखा होगा जिस प्रकार से चकमा हाजों का जब हम लोग बात करता है, वहाँ जो रिफ्यूजीज था जो 1964 to 69 में उन लोगों का प्रॉब्लम का कारण से यहाँ टेम्पोररी सेटलमेंट that to be taught the concern of the indigenous people वहाँ लाया गया. आज वही मालिक बनने के लिए कर रहे हैं. आप देखा होगा they are now challenging the administration. जो पिलर बना रहा है उन लोगों को तो जब आया था उन लोगों को allotted blocks, they were given allotted blocks और उन लोग हमेशा प्लट का कुछ बहाना करके हमेशा ये रोरा लगाता है. लेकिन इस बार we are seeing that there is a proactive administration in Changlang district और उन लोग उस दिन जब डेमोक्रेशन का बात किया तो they are making a hue and cry out of it. They are taking law in their own hand. और ये आप सब या गुरुगण है या सब हमारे स्टेट का फ्यूचर्स हैं, आप सबको ये जानना है जो डेमोग्राफी चेंजेस है. मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म में जब भी मौका मिलता हूँ इसका क्योंकि मैं आपसू का प्रतिनिधित्व करता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ. वहाँ जो हमारा चकमा जो सिंगपो भाई है, जो सिंगपो जनजाति है, उसका जो पॉपुलेशन है मात्र हार्डली इट विल बी 15,000 और जो रिफ्यूजीज है इट हैज क्रॉस जो 1 लाख का जो पॉपुलेशन क्रॉस कर गया. तो अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें तो दखलंदाजी करेगा ही और जो फ्रिक्शन शुरू हो गया. और आज देयर इज एन ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन ये जो मियो बरदुमसा जो उसमें वो में एरिया में. तब भी हमारा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या ह्यूमन राइट कमीशन हो तो आई फिनिश इट ऑफ तो उसको लेकर हमेशा ब्लेम हमारे ऊपर में, ट्राइबल लोगों के ऊपर में ही हमेशा डालता है. तो मैं यही आप लोग से भी गुजारिश करूंगा, आप सब पहुंचे हुए लोग हैं, कुछ अगर लिखते हो भी तो हमारे पक्ष भी कभी कभी लिख दीजिए, वहाँ का लोगों का जो तकलीफ है उसके बारे में लिख दीजिए. और उसके बाद इवन इफ आई एम एन स्टूडेंट लीडर, जो स्टेट में अभी सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम है जो 50 इयर्स में हम लोग सफ़र करके आया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो प्रॉब्लम है तो इसको हम गवर्नमेंट से आज इस मंच से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो यहाँ प्रॉब्लम्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसको इसका ऊपर में भी चिंतन मंथन करना है. अब 50 इयर्स हो गया यहाँ इतना कलरफुल से सेलिब्रेट कर दिया बात, लेकिन हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं अगर वो मौका नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो उभर के आएगा. तो मैं ज़्यादा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में मैं देना चाहूँगा. जो अभी हम लोग देखता है जो APCS का जो एग्ज़ाम्स है और SSB का, तो उसमें अगर हम बोलेगा तो हमारा जो पॉपुलेशन कितना है, वेयर मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन कुड बी अराउंड, यू कैन पेग इट अराउंड 7 or 8 lakhs और उसमें भी हार्डली 1 लाख लोग ही ढूंढ रहा होगा नौकरी के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है. प्लीज कंक्लूड. तो इसलिए मैं ये मन से जो 50 भी जानती है, मैं जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको लेकर मैं यही करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए, उसका ऊपर चिंतन मंथन करना चाहिए. बिकॉज आवर यूथ्स, आवर एजुकेटेड पीपल्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट. विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. Thank you, Tabamraji, for supplementing what the President Baganji already talked about. Now with this, I'll request the senior most panelist, the Honorable Member of the Legislative Assembly, Hayang Mangfiji. Please keep it in the time frame so that we can take another round. Galaxy of professors and other esteemed members of the university. I was expecting a bit jam-packed audience of young minds here because I always believe unless the young minds are ignited, no state can prosper. So I, as a young member of the Legislative Assembly,
have a serious thought how we should go about. When we retrospect, we have struggled so far 77 years, right from the 45 until date. We got this name, and then this is a 50 years of naming ceremony only. And now we have again responsibilities to go a long way. The topic, the theme of today's panel discussion is very good. Political development, issues and challenges. It is a very good theme. Political development is a process of evolution. It's a process of evolution. Anything can happen in any point of time. When we retrospect, there could have been a bad contribution, good contribution, but it is a continuous process. And especially in political arena, it is always there. But a serious point to be pondered now, especially when we talk about RGU, the Lone Central University, we must ask ourselves, because this is the highest temple of learning, we must ask ourselves, because we must ask ourselves means what? What we are doing, are we really contributing towards making Arunachal? Are we doing justice to our jobs? These are all issues. It is not all about political thinking process. It is all about how we can contribute for making Arunachal Pradesh. This is a serious point to be taught. Now my friend panelists, all of them have said, issues and issues. Issues will go on. No boundary issues are settled. International, local issues boundary issues has to go. It has to go a long way. But we need to ponder upon what are the challenges to face it. This is the issue. Now, if my friends from APSU, NATIO, I kept on saying, they create issues, they raise issues, but they will never suggest what is solution. When we talk about chakmas, when we talk about hydropower scams, when we talk about anything, we must able to suggest, because taking Arunachal to a right direction and for a right perspective plan, it is a collective effort. We must not only pinpoint on the functioning of the government. Government represents you, it is our people who represents Arunachal Pradesh. It is not only the CM, it is not only the AMLA. It is our collective responsibilities to make Arunachal a better Arunachal, a livable Arunachal. So, one thing, again a serious thing, when we, even within the assembly also we discuss, to make a state prosper, a progressive one, a developed one, what is required? We need to create wealth. And what is that wealth? Is it by establishing a factory which provides jobs for certain section of the people? Is it only that we make big roads, airports only? I think the biggest wealth, if we invest, is an investment made on universities, because this university creates wealth, and this wealth is an intellectual asset. Unless this institution, these colleges, universities are given due importance, no states can prosper. No individual can prosper. So, other way around, I was asking, are you contributing? I was asking about the RGU's functioning again. If you produce a good product, you will surely make a good citizen. If you give a good product, there will be a responsible MLA in the assembly. There will be
responsible government employees in all sectors. Top of it, that all these union budgets will be manned by a responsible leader. Because in Arunachal context, I have seen, and it is a fact, the role of opposition is lesser, and the role of opposition is played by the students' union. And we must, I beg apology if this is offended to both my friends, we must appreciate, because I was also ANSU president, I must accept that the dynamism of students' union, comparing those days to now, is no more there. It is because university students are not doing justice to their duty. It is because their thought process has changed into an individual mind. They are not sharpening their mind to compete the world. They are doing only to earn little money. This is a sorry state of figure. I must beg apology to all the stakeholders, whatsoever be. So let us, I openly always said, even in the assembly also, I say, no party base. When you are in assembly, let us speak for Arunachal first. Now, luckily, in the state of Arunachal Pradesh, as on that, those persons in the helm of affairs are doing good things. Unluckily, the electoral college are having no knowledge about what is election. What Plato says. I'll not quote the old lines, but Plato says, if you are being governed by the inferiors, then to Katam. Because these people who cast us vote doesn't know what is election. They do not see the representability. They do not ask about the service for the common cause. They want something from us, what? Cash for both at the mosque, mortgage for jobs, or else on the basis of clanism, relativism. Such practices and trend must be done away with. Because we as a lawmaker, if I am not representable and I do not have first-hand information about my people and place, I am not worth representing. So, this is a right platform, right place in the university today we are here. All of us must take it as a collective responsibilities to reach out to the people, to at least make them aware of some rights, electoral rights, and to see that truth is always truth. We must ensure. In Arunachal Pradesh, it is a random practice. MLAs are coming out only because he represents a major clan. MLAs are coming out only because he has a money. MLAs are coming out only because he was an engineer or doctor or professor, anything else, nothing doing. It must be a subjective knowledge, one who comes from different field, but not on the basis of the money or the community or anything else. Another thing, what I want to say, now Arunachal, we are heading towards a newer height of development led by Pema Khanduji. He is a thorough gentleman. I can say he is one of the most performing chief ministers within our nation. He is doing well. If nothing happens today in Arunachal Pradesh, if we do not allow him to work, if the initiative being initiated by us, our party, and under his leadership, tomorrow nothing will happen again. Because today it is being governed with a collective mind for making Arunachal a pan-Arunachal. Social security of every community is ensured. Development of every sector is ensured. Balanced development is being taken up. I see a very good and vibrant leadership as on that in our state. And I also feel very comfortable to work with him.
You might have seen our speaker also, is also a thorough gentleman. But political issues for talks is different issue today. We are expecting, because I might be taking a little higher time than allotted to me. I beg apology, but I request my friends, especially the professors here, the galaxy of professors here, let us activate our mind, let us ignite our mind, let us work together, take the responsible state as a collective responsibility. Don't pinpoint on anybody as an individual initiatives. If we are together, I believe Arunachal will be a livable place for all and one of the most prosperous state in the country. Thank you, sir. Anything wrong? Thank you for putting the point so eloquently and so emphatically. We are running towards 2:30. It was supposed to be. So, looking at the audience, I can see perhaps many of them, including some of our speakers, are also hungry. So what I'll request, if you bring two pinpointed questions to any of these four panelists, then we can have a final words from all the panelists, maybe 1 or 2 sentences, and then maybe another 2-3 sentences from my side. So with this, I'll request the audience, if you have some very specific, not the alternative narrative, so that you can put forward. And especially I'll request our, the members, women representative in the audience, so that some kind of gender balance is maintained. Good evening, everyone, and respected. Just straight away. Okay, panelists and everyone. आपसू से है क्वेश्चन. हम लोग छोटा से 90s से हम लोग जब 94 में क्लास 1 में था, तब से हम लोग सुनते आ रहा है कि आपसू जो है चकमा हजम को फाइट कर रहा है. आज तक भी पढ़ रहा है ना. कितना लीडर्स आया, कितना लीडर्स गया, MP MLA बन गया. जब आपसू का प्रेजेंट उसमें रहता है तो बात करते हैं, जब MLA बन जाएगा तो बात अलग हो जाता है. और अभी भी हर रोज़ ऐसा पढ़ने आता है. एक सुहास चांगमा हर रोज़ टाइम्स में आर्टिकल देता है कि चांगमा विक्टिमाइज है, उनका पास UNO में रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करता है. लेकिन आप लोग सिर्फ हेडलाइंस में रह जाता है. ग्राउंड में चांगमा एडवांस होते जा रहा है. जमीन वो कब्जा कर ले, वो गाँव कब्जा कर ले. ये कब तक होता है? अभी तक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, सिर्फ मीडिया का आगे रिजिजू आएगा, CM आएगा या कोई भी आएगा उसको हटाएगा, लेकिन कोई रिटर्न हम लोग को सबूत नहीं. ये क्यों हो रहा है? और दूसरा, मैं एजुकेशन को लेकर सर MLA सर को मैं पूछना चाहूँगा. हमारा CM सर जब 2016 में न्यूली जब आया था, उन्होंने बोला कि एजुकेशन में क्वालिटी आना चाहिए. तो उस क्वालिटी के लिए उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को बदनाम किया. साइंस में हम लोग का ट्राइबल लोग पोल है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोल के 50-50 कर दिया टीचर पोस्ट को. मैं स्पेसिफिक जा रहा हूँ उसको. तो 50-50 किया है 2016 में टीचर रिक्वायरमेंट को, नॉन ट्राइबल को. उसका बाद 2018 का आपका कुछ CBSE रिजल्ट है, सियांग का है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट. पास परसेंटेज ओनली 15% स्कूल का. बहुत सारा स्कूल 19 में भी हुआ. तो उसका बाद गवर्नमेंट क्यों तब अपना वो 50% रिक्रूट वाला आउटसाइडर को क्वेश्चन नहीं कर रहा है? आप लोग को चांस दे, लेकिन कैसे डेट्रोटेटिंग एजुकेशन, उसको कोई सवाल नहीं करता है. वो उसको हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है. क्या क्वालिटी एजुकेशन साइंस सब्जेक्ट से सिर्फ आता है? और वो दूसरा आपसू लोग को स्पेशली बोला कब ये सॉल्व होगा, और गवर्नमेंट भी बताने से ठीक है. थैंक यू. And I'll request any one of them can respond. Okay. इसमें ऐसे है, फर्स्टली ये मुद्दा जो इंटरनेशनल इशू है और रिफ्यूजी इशू है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ILP चेक किया था. गवर्नमेंट अगर अरुणाचल में ILP सिस्टम बहुत लूज हो जाता, हम लोगों ने खुद चेक किया, तब इसमें लाइक एक बांग्लादेशी पकड़ा है ना, असमीज समझता है ना, हिंदी ना इंग्लिश. तब पाँच आदमी जैसे हम लोग पकड़ा है, तब
मुझे अरुणाचल का डीजीपी ने कहा है कि बेटा इसको असम में इसे छोड़ दो, अगर ये रिफ्यूजी है बोलने से फिर अरुणाचल रिफ्यूजी क्यों मिलेगा, ये एपिन हो रहा है। सेम चीज़ 1995 में चकमा आजंग को यहाँ से डिपोर्टेशन शुरू हो गया था, तो प्रॉब्लम ऐसे हो गया तो असम होके जाना है, तब असम का गवर्नमेंट एक तो शूट एंड साइड एक ऑर्डर पास किया गया, तो वो ऑर्डर का वजह से चकमा आजंग को हम लोग यहाँ से नहीं आता पाया बिकॉज ऑफ असम गवर्नमेंट, क्योंकि असम जो है ऐसे शुरू हो जाए कि अरुणाचल रिफ्यूजी मेरा स्टेट में क्यों आएगा, तो इस तरीक़ा से बहुत सा फैमिली भी गया था। सेकंड जो है हम लोग जैसे हम लोग फॉर्मर ऑफिसर जनरल सेक्रेटरी गोमजम आदरा ये भी यूएनओ जैसे प्लेटफॉर्म में लाया है। पहले क्या था, आज और पहले का डिफरेंस क्या था, हम लोग आदमी दिल्ली लेवल में नहीं था, यूएनओ लेवल में नहीं था, ह्यूमन राइट लेवल में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट लेवल में नहीं था। आज हम लोग आदमी हर जगह पहुंच चुका है। रिसेंटली आप सुना होगा 4,300 समथिंग चकमा आजंग को सिटीजनशिप दे रहा है, वो टोटली फेक था। तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है, 22 टाइम हम लोग ने केस में अटेंड किया, हम लोग ने उसको हरा दिया। पंचायत में 1992 में पंचायत इलेक्शन में चकमा आजंग को आपसू हरा दिया। अभी वो लोग हर एक चीज़ में हम लोग को सकेगा ही नहीं, जस्ट आदमी को इंसान है उसको कैसे करके हम लोग साइक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली पॉलिसी बना ले और वो जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। और आपसू नहीं होता, आज हजारों लाखों चकमा आजंग यहाँ में बेच जाना होता। ये आपसू का समय में, मेरा समय में जो काम किया मैं बताया, मैंने चकमा आजंग को सुप्रीम कोर्ट में हराया रैली। अभी वो कोई सिटीजनशिप का कोई इशू ही नहीं होगा, वो झूठ मारा है। बोध गया, बिहार का बोध गया में बैठ के 1-2 आदमी में साइन करके टप्पा मार के 4,000 ज़्यादा आदमी को दिया गया, इसलिए हार गया कोर्ट में। तो चकमा आजंग इशू जो ऑलमोस्ट अभी सॉल्व है। Okay, thank you. Let us again look at the watch, 2:30 we are already. So if everybody agrees, if there is any other, I think more than 2 questions you have asked at a time. So I'll request all the panelists here. I think our senior most panelist presentation is still so much, in our memory. I'll say, looking at the time frame, instead of taking it further, the first panelist, Professor Nakahina, if you want to say anything as a kind of not final comments, everything is semi-final in larger sense, if you can tell anything out of your observation. जैसे अभी मैंने शुरू में ही कहा था कि here we are not representing any political party and whatever we say, this is not in the view of the political interests or agendas. So this is a purely academic discussion. तो उसको otherwise नहीं लेना है। उसको बोलते हुए, for example, अभी हमारा मंगपी साहब हमारा अपना एज ग्रुप है, don't take it otherwise, बोला कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। This is a wrong perception, I think. तो हमारा एक समय में एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, मैं एज ए स्टूडेंट मैं किसी आपसू प्रेसिडेंट का साथ में उस मुख्यमंत्री का ये मैं दरबार में गया, आई एम द गॉड फादर ऑफ दिस स्टेट बोला है। वो गॉड फादर ऑफ स्टेट आज नहीं है। दिस काइंड ऑफ द परसेप्शन वी हैव टू चेंज। एंड सेम पर्सन व्हेन स्टूडेंट वेर ड्राइविंग अवे द चागमास एंड रेफ्यूजीज, द रेफ्यूजीज एंड अदर पीपल फ्रॉम आवर स्टेट, सूट एंड साइड हमारा अपना ही सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया कि आपसू वाला को देखता है गोली मारो। दिस काइंड ऑफ परसेप्शन वी नीड टू चेंज। वी हैव टू हैव डेवलप द सेंस ऑफ डिलीवरेंस। वो जो ये जो नाका बोल रहा है ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट बोल रहा है, हवा बगंग बोल रहा है गवर्नमेंट का अगेंस्ट, हायंग मंगपी बोल रहा है गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। दैट काइंड ऑफ परसेप्शन इज डिस्ट्रॉइंग आवर इंटरेस्ट। वो लॉन्ग रन में जाके वही हमको ख़त्म कर रहा है। उसी चीज़ अगर आपसू ठीक बोल रहा है बोल के आपसू का स्टैंड को सपोर्ट करता तो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम। यही चीज़ को मैं बोलते हुए, एंड दिस इज़ फॉर एग्जांपल मैं अभी बहुत द प्रॉब्लम्स को मैंने बताया है, नोबडी इज पार्टिसिपेटिंग, एंड यही प्रॉब्लम लॉन्ग रन में जाके हमको ख़त्म करने जा रहा है।
And it is going to create problem, already creating problem, it is going to create problem for us. So with this, हम लोग उसको ये में again I am telling, we are not representing any political party, not the government. यहाँ में जो भी आता है intellectual जो है academic discussion है, issues क्या है उसको हम लोग discuss करना है. Thank you. Hello. Hello, Hello. We have lunch session. There things can also be discussed, right? Please. If any one of you want to say one single sentence, otherwise I'll take up and wind up. So once again, good afternoon to all of you. I think any good things also must come to an end. Okay, just tell. Okay. I mean, during lunchtime also, if you have something, things can be discussed. And we don't expect that whatever is raised here, everything will be solved and settled here, right? But I must express, as a moderator, my thankfulness to all the distinguished speakers for making their points very emphatically. But I'll back to what Professor Bhagavati talked about and the point from which I have started, that by and large, it should be perhaps perceived as a truth that the state of Arunachal, whether you look at the 50 years from the Union Territory to the statehood, or if you look back to the post-colonial time, there cannot be any denying of the fact that the state has transformed so meaningfully. And as a result of that, if you look at the audience, if you look at the speakers who are sitting here, I think if you look at the institution where we are located right now, I think that itself symbolizes the question of the qualitative trend or transformation which I was trying to tell. But at the same time, let us not forget the other side of the fence also, which all our distinguished panelists are trying to put forward, whether it is in the context of demography, whether it is in the context of the resource mobilization, or even in the context of the other issues which are put forward in a very succinct way that need to be taken into consideration. I'll just end up talking to a very favorite book of mine, which I'm still carrying. It is none other than written by Elwin, Verrier Elwin, A Philosophy for NEFA. I'll tell that the philosophy of NEFA, which was published in 1957 for the first time, it was written for the administrator, those who came from different parts of our country to administer this part of the state. But with the achievement of the statehood, when the statecraft is run by the people of the state, we can understand that there is a significant change that has taken place, and all of us are part of that, the transformational scenario. But as I told, there are so many challenges before us, which Honorable Speaker was talking about, that we should talk about the glorious past, and we also try to ensure how we can ensure our beautiful future. Now, if you want to ensure our beautiful future, we need to address collectively, these are the issues which put before us. And along with that, I'll also add that within the state, there are so much of small number of tribes who are population-wise, we call minor tribes, minor in a sense of their population strength. In my 27 years of existence in this institutional frame, I have seen their presence
very minimal. Many of the tribes, I never seen them came in the university system, right? So I'll urge the people who are here very much, the other side, right, who are also the stakeholder of this, the state of Arunachal Pradesh, please look at those kinds of voices also, so that we can ensure a meaningful transformation of this state. Thank you. Thank you, the moderator, Sarit Sir, and the panel members. With this, we come to the conclusion of the panel discussion. We'll break for lunch, and then we'll leave. I request all the teachers and audience to please join us for the lunch. For the teachers and others, we have arranged outside, and for rest of the guests, we have arranged inside. So we request the teacher to directly go outside and we'll have lunch there. Thank you.